भाषा को borrow करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. जैन जी की भाषा में मैं अरे सुनो यार सुनने की आदत रखो। जैन जी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जैन जी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए, जंतर मंतर तो नहीं जा सकते। Very warm welcome to the latest edition of Republic Defense. I am Rakshita Mishra with you, and we have a power-packed edition of the show this evening, viewers. From what's happening as far as the Pakistan is concerned, the unleashing of terror tactics is concerned, to also how India is boosting its air defense system with Project Kusha, the Kusha missile test. We're going to get you details of that and much more on the show on Republic Defense. And viewers, India successfully completed the maiden flight test of Project Kusha, an ambitious project, and India's indigenously developed invincible air shield, completely made in India. And viewers, it was not just a missile test, but it was the first step towards a homegrown architecture, defense architecture, and our air shield that's completely made in India. We saw the S-400, the Sudarshan Chakra, the use of it during Operation Sindoor, and now the Kusha missile system will be a level up and an indigenous answer to systems like Russian S-400, Israel's Iron Dome. So let's take you through what really we expect from the Project Kusha. Why is it significant? How does it reduce the dependency to S-400? Because that has proven to be a game changer. But this one, viewers, when operational, will be actually changing the game for India. So it is indigenous, completely indigenous. It's a long-range air defense system, a long-range air defense missile. It's multi-layered shield against aerial threats and threats that are far off. It can engage multiple targets simultaneously. So if there is a barrage of missiles, it can actually engage multiple such missiles, and it can intercept multiple of such threats. Integration with advanced radars is another point, another significant feature of it. And it's also linked with Indian Air Force's Air Command System, of course. India's indigenous S-400 system also, of course, forms an important part. It would be actually supplementing initially the S-400. It is not going to replace it right away, but it's going to supplement and support the S-400. If we go to how the interceptors are different, there are three interceptors, three kinds. M1 is short to medium range targets. It targets cruise missiles, drones, stealth aircraft. The range is different, of course, so there's a difference in the ranges. M2 interceptor is medium to long range targets, and it tackles, of course, ballistic missiles, and for long range targets tackle hypersonic threats and strategic bombers. So this is M3. This is going to actually change the game. This could even go as far as 400 kilometers. I'm talking about the range here. The key part is the difference in the ranges as far as the three kinds of interceptors are concerned. So Kusha being the game changer is what we are going to talk about in this edition of Republic Defense, and we are also being joined by our guest,
In fact, first, before we go across to our expert, let's listen into what the Raksha Mantri had said just a few days back in June. He had hailed the strategic vision behind the Kusha missile system, calling it a game changer for India's security. Take a look. प्रोग्राम कुशा वास्तव में भारत के सिक्योरिटी सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं आज ही। और ये अपनी क्षमता में वर्ल्ड क्लास इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस तरह के इक्विपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका महत्व हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। अब किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, उस दौरान जब आसमान से तरह तरह के खतरे हमारी सीमाओं पर बढ़ा रहे थे और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह दुश्मनों के इरादे को नाकाम किया था, वह इनक्रेडिबल था। जैसे द्वापर युग में, आपने पढ़ा होगा, द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज की रक्षा की थी, वैसे ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षित अम्ब्रेला प्रदान किया था। So let's get you more details on the air defense shield of the country, why it's important given the geopolitical situation, what we observe across the world. Now, this viewers Kusha defense system is part of the mission Sudarshan Chakra. Now, it is a multi-layered national air defense shield that will be completed by 2035. This was in fact announced by the Prime Minister Modi from the ramparts of Red Fort during 15th of August. And it's interlocked, AI-enabled and air defense. It's an AI-enabled air defense infrastructure. So there is modern technology that is used. The most advanced technology is incorporated. And of course, it derives its lessons from Operation Sindoor. So S-400 did the job. Akash system did the job for India. But yes, Mission Sudarshan Chakra is like India's own Iron Dome. So it's on the lines of Iron Dome and Russia's S-400. We are looking to reduce dependency on these foreign systems. And of course, it's a formative pillar that we are talking about, which is Project Kusha. So let's now go across to former Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Anil Khosla. Pleasure having you, sir, on our defense. Sir, first of all, it's of course a big development, India's successful test of the Kusha missiles. And as we see what's happening all across all across the globe, and given India's threats also on different fronts, how much of a game changer, sir, this missile system could be? Yeah, thank you, Rakshita. Good wishes to you and your team and the viewers. Kusha is in the news very much at the moment, with the first test successfully carried out on 23rd July. And as you said, it's going to be a game changer, even the RM said, Prime Minister has said. So when we got S-400, I remember we did a lot of work on it for the induction, and we reduced quite a bit of other air defense systems to rationalize the spending. And Op Sindoor has proven it that S-400 was very, very useful in terms of defending incoming missiles. And not only that, it pushed the enemy away from the borders, and we shot down a high-value aircraft at extreme limits. And that proved that the system is very, very valuable, and the enemy gets pushed further behind. And Pakistan doesn't have that much of depth, this thing. So this system is definitely going to be a game changer. And of course, we have S-400, but the indigenous system is always better in many ways, and we can go on the advantages of indigenous system. There are quite a few. Air Marshal Chopra, also I want to understand from you, how does it really reduce the dependency on S-400? Will it in future replace the S-400? Yeah, so what is happening is when we calculated the S-400 and the kind of scenario we have, the two-front scenario, and when we realized that the number of systems required are quite a few, but they were expensive, so we limited the numbers. So initial, what we have procured from Russia, we need more than that, much more than that. And that is why the indigenous thing comes in. So if the indigenous system like Project Kusha comes in, it will add to the defense capability of the country. And numbers, of course, will be this thing. And plus, it will have advantage of
future scalability. No, it's not only getting a system, you have to get the ammunition, you have to get the number of missiles, you have to look for the upgrades, you have to see software upgrades and all those things. And this will be very, very useful as far as integration with our system is concerned and scalability when required in the time of war. All right, sir. Many thanks, Vice Marshal Anil Khosla, for joining us on Republic TV and sharing your assessment of this big development as far as the test by the DRDO is concerned. Viewers, now we shift our focus to other stories that we are packing in, viewers. This is what's happening in the valley. As we see, POJK and Balochistan is slipping out of Pakistan's clutches. Pakistan is now resorting to the same playbook. It's unleashing terror, resorting to its cowardly pattern of target killings in the valley. 2 migrant laborers, viewers, on Friday were shot dead. But these were not isolated incidents that we're talking about. It was one among the many that were being planned from Lahore by Lashkar-e-Taiba. Now let's get more details also on this. Now this is planned by Pakistani handler of Lashkar-e-Taiba, and they were also behind the Pahalgam terror attack. Sajid Jatt is one of them we are talking about, and he is one of the key plotters of this entire attack. And we are going to show you the visuals of what has happened. These are series of target killings. That will also tell you one important thing, how there has been a pattern to this. Let's just fire those graphics. How there has been a series of target killings. Pahalgam terror attack, as we saw, what happened, how religion was asked, and they targeted Hindus. In Kulgam, we see the same. In fact, throughout 3 years, 3 to 4 years, we've seen that there have been target killings, especially after the abrogation of Article 370. We've seen there has been a wave of attacks on those who are migrants. They're Indians, they're migrants, and attacks are being planned in Pir Panjal region as of now in central Kashmir. And in fact, my colleague Zeenat has filed a report from Kulgam. Listen in to this ground report. In Srinagar, and later the last rites of the deceased will be performed in Kulgam. So the dead bodies will not be sent back to their native place, Chhattisgarh. Meanwhile, the terrorists who are involved, the police is trying to locate, they are trying to hunt them down, the security operators up. LG Manoj Sinha chairing the security review meeting, where apart from the Anantnag killing, the Kulgam will also be discussed, because this is the terror attack taking place when the Amarnath Yatra is on. The security is up across Jammu and Kashmir. Meanwhile, the intelligence agencies suggest that the terrorists who carried this attack yesterday evening, they were the motorcycle-borne terrorists, and the AK-47 was used while carrying this terror crime. There are certain reports that suggest that the Sajid Jatt, who operates from Pakistan, was also involved into the Pahalgam attack. He is also behind the attacks that are taking place in the Kashmir Valley. Is it like the Pakistan is still into the nefarious business that has been the history of the place, and they're trying to keep the pot boiling by targeting now the non-locals, because the migrant workers, the last attack was seen in 2024 in February in the downtown Srinagar, where the carpenters coming from Amritsar were targeted. This entire chronology, we've seen how many times that there have been target killings. The latest one, of course, is what happened in Kulgam. As we told you, in fact, migrant workers have been attacked. Now the death toll has risen to 2. In April last year, we saw how there were at least 26 tourists who were killed, and Indians were killed. They were all Indian nationals, of course, viewers. They were all killed on their own soil, viewers, that is Jammu Kashmir. In October 2024, let's go back to what happened in Gandarbal. 6 non-local workers were killed in Gandarbal. In February 2024, the same year, there were 2 non-local workers who were killed in Srinagar. May to June 2022, there were a series of selective killings across Kashmir for 2 long months, back to back.
In October 2021, 11 of them were killed. 11 civilians were targeted. That included those who were from other parts of the country. We are being joined by a defense expert, geopolitical expert, Lieutenant General D.P. Pani joining us. Thank you so much, sir, for joining us, Republic Defense. So, at a moment when we see that Pakistan is completely helpless, the state is crumbling, POK is revolting like never before, Balochistan is taking on Pakistan like never before. And now we see that from what happened in Anantnag just few days back to now, what happened in Kulgam, sir, there's a pattern to these diversionary tactics of Pakistan, isn't it? So when you look at whatever action happens by the Pakistanis, they are based on timing and a certain degree of messaging. And what I try and read into this timing is, when you look at Pahalgam when it happened and these last two killings of a policeman on duty in Anantnag and now two migrant workers, the modus operandi remains also quite similar. The timing is that there is a challenge within Pakistan. There's an issue which is happening there. The entire world is now getting slightly focused without being, initially they were not, but slowly the world attention is coming on to the POJK into the occupied territories, what is happening where virtually unarmed, non-violent civilians are being killed by the Pakistani military and the forces. And that is the time they need to divert this tension again back into the Indian side, and what best to do is to carry out certain degree of killings, which are very highly cowardly and done through the terrorists who are under their control. So there is one part. This is how the timings play. In fact, even in case of Pahalgam, if you look back, there's a situation which was developing in Pakistan, and Asim Munir made his play to ensure that the diversion from the internal matters start moving out to some other issues. So that is one part. The second is, please look at the modalities are quite similar. In case of Pahalgam, very clearly religion was used as people to be identified, and I'm told same is the case in this present event as well, in which possibly the first two names when they came up and they found to be Hindus, they shot these two non-local laborers who came for merely for a job to make the earning for the poor families. Easy targets, easy to be killed, and that is what happens here. This also has started shifting. If you look at a little bit linkage, which people have not possibly thought of it, and they should start thinking that once Hamas came into Lashkar-e-Toiba headquarters in Pakistan and occupied territories, a shift of this type of killings have started taking place, and especially based on ideology, because it ensures that people of Kashmir gets unnecessarily into focus in two manners. One is such a killing will ensure that the peace stability which is there in Kashmir, which has been very hard fought over so many decades, and they are seeing a prolonged periods of peace and stability and tourism, economic activity, development, infrastructure and everything, that gets harmed and damaged. So that is one part of this. And second is, internally within the country, the moment you ask a religion and that kind of indication is given, which came out somewhere in our discussion yesterday, then what happens is a certain focus comes out on the people of Kashmir, and that leads into a certain degree of division within our own country. So these are things which people need to see more carefully and ensure that the intentions of the Pakistani and Pakistani handlers to carry out such terrorist strikes should not flare up and go out of control, because those are their intentions and aim, and that is very important. Lastly, I just want to say again, a lot of time people will start criticizing given examples of state failure, state machinery failure of law and order and intelligence. We need to understand there are two spectrums of it. In case people want perfect security, then they will have to become a security state, which is not a good condition. We will have police post and RR and CRPF post almost in every village or every alternate village, which is not very good for a democratic country like ours. We are not Pakistan, or we are not so many other security state where the security gets after the people who normal citizen, and that is
not a good state. The second is the issue of intelligence. Please understand that while 6 years or 6 years have passed since the time application has taken place, nearly 6 years of great amount of peace which we are seeing in Jammu and Kashmir, we must understand that there is a certain mindset which remains resilient, alive within the Kashmir and Jammu and Kashmir environment, who are not very happy with the kind of peace which is there, and they will continue to find ways and means to create trouble in people in which people are hassled and troubled rather than only the terrorists. So it is the responsibility of the people of Kashmir also to start introspecting, because such elements live amongst them and they need to ensure that they are picked out, and the law and order should take their own course. Very rightly pointed out there, Lieutenant General Pandey. Appreciate you joining us on Republic Defense. Thank you. Thank you, Akshita. And we were now shifting our focus to how steps are being taken for Indian Army's performance and Indian Army's adjustment in different weathers, functioning in extreme weathers. Now Indian Army has unveiled extreme weather grade diesel. Indigenously developed fuel has been engineered to provide mobility at temperatures as low as -40 degrees Celsius with ant-waxing technology. It will strengthen India's defense logistics at the northern high-altitude border by providing increased mobility to combat vehicles. The extreme-grade fuel is also an addition to India's Atmanirbhar defense tech, as it has been developed indigenously. Listen into what Chief of Army Staff General Dheeraj Seth said while unveiling the fuel. I'm from the Armored Corps, therefore basically being a tank man. And in fact, our initial years, till I was a CO, that is the first 20 years of my service, actually revolved around fuel, oil and lubricants, and more specifically diesel. Our life actually revolved around diesel. How much diesel is left in the tank, on the barrels, what is the cruising range left. So it was everything moved and rotated around diesel. So we've really grown up counting diesel barrels and making them move behind our tanks. So I really can fully appreciate the kind of advantage that this particular XWG is going to render to both A vehicles, that is the tanks and vehicles of that category, as also the B vehicles, that is the lorries and the lighter ones, in these extreme weather conditions. And on to the final segment, viewers. Air Chief Marshal's message on self-reliance coming in, stressing on the need for innovation and Atmanirbharta in air defense. Air Chief Marshal AP Singh said, technology delayed is technology denied. Another very important message on the pending deliveries, it seems. Now, this comes as the war zones are changing, defense tech is evolving, and India needs to adapt. He emphasizes on that. And Air Chief Marshal AP Singh also focused on self-reliance, building Atmanirbharta in defense as well. Take a look. Technology delayed is technology denied. There is no point having something which comes later than when others have got it and gone beyond it. So we need to push ourselves to make sure that these things happen in time. And not only just technology staying in lab. Dr. Ranjana just mentioned, we have the technology, but it's not gone beyond lab. Then no point. So we need to have the production capability, we need to have the scalability. Technology delayed is technology denied. There is no point having something which comes later than when others have got it and gone beyond it. So we need to push ourselves to make sure that these things happen in time. And not only just technology staying in lab. Dr. Ranjana just mentioned, we have the technology, but it's not gone beyond lab. Then no point. So we need to have the production capability, we need to have the scalability. And viewers, also we bring you a glimpse of the flood situation in Assam. The state has been battling deadly flood situation since the mid of July, with the death toll breaching the 70 mark. Multiple districts including Sivasagar and Golaghat have been submerged, affecting critical supplies. We also show you how the Indian Army has launched Operation Rahat, airlifting relief in active flood zones. Over 100 people have been rescued. More than
16,000 are in relief camps, and the army along with NDRF and SDRF continue to supply food and essentials to the affected areas. We leave you with these visuals. Thank you so much for watching. Jai Hind. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। और मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but you know, we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan. Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but you know, we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, yeah, because it was another smaller event. But no, they sent 8,000 mile-an-hour missiles at us, and fortunately we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Nobody else could do that but us, yeah. US forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on US forces based in the Middle East. The escalation comes after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed responsibility for a missile attack on a US airbase and command center in Jordan. The US military says all the missiles were intercepted. Even as airstrikes continue, CENTCOM says it is strictly enforcing the American blockade against Iran. As of July 29, US forces have redirected 20 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2 others. With Washington and Tehran exchanging attacks once again, fears of a wider conflict in the Middle East are growing.
The big question now is whether the confrontation will stop here or spiral into a larger war. अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है. वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां और वो नारा देते थे. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very warm welcome, viewers. You're watching Republic TV. This is Shivam Dutt Mehta, and the top focus story is the Kulgam terror attack, which claimed the lives of 2 innocent laborers. And there is a Pakistani link behind this terrorist attack. And also, the same mastermind who was behind the Pahalgam attack is the mastermind behind this attack too. We'll get you all the latest details on this story and a lot more. But first up, let's have a look at the top headlines of the hour. Headlines brought to you by Canara Bank. Together we can. 2 laborers killed in terror attack in Kulgam. Massive search operations underway to neutralize terrorists. Pahalgam rerun in Kulgam. Hindus targeted by terrorists in dastardly terror attack. Mastermind behind Kulgam terror attack identified as Lashkar's Sajid Jatt, the same terrorist behind the cowardly Pahalgam attack of 2025. तो सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे. PM says punishing young people serves no purpose, appeals for forgiveness, reconciliation and a constructive path forward. Ruchika Singh, who abused Prime Minister Narendra Modi during CJP protests at Jantar Mantar, now apologizes to Prime Minister Narendra Modi. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav warns against religious conversion, says those involved in religious conversions in tribal areas are to be jailed. An FCRA bill to be tabled in Lok Sabha next week. Amit Shah to lead the debate. Asmita De, Harsh Singh make history as India's first gold medalists in judo at Commonwealth Games. Asmita De makes history at Commonwealth Games as 23-year-old from Tripura becomes the first Indian to win gold medal in judo. Neeraj Chopra wins silver, Yashveer Singh bags bronze at Commonwealth Games in javelin throw in Glasgow. India's total tally is now 23. All right, viewers, let's begin this bulletin with a big breaking news development. We have a big statement coming in from NSA Ajit Doval, and he states that there are many challenges to India internally and externally, and not everyone will be happy with India's progress. And Bharat's progress is dangerous for many other countries, and we have to face those challenges. We have to be united for this, and we have to think about the country. He's speaking right now in Pune. Let's listen in. मुझे कि तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूं. तम अंधेरे को कहते हैं. जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके,
तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। तो दिनकर की वो जो ललकार थी कि प्यारे स्वदेश के हित विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती सुनेत्रताई पवार जी, तिलक स्वराज स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक और इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण और इस सभा में उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं इस मंच पर यहाँ पर आकर अपने को एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति में समझता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का, सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बारे में कहा। सत्य क्या है ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम पूरा। मेरे बारे में आप ऐसी धारणा रखते हैं, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। साथियों, आज एक विशेष दिन है। यह विशेष दिन है हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेषक, स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्भुत सेनानी, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, उनकी 106वीं पुण्यतिथि का ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पुणे में, जो उनकी कर्मभूमि थी, और आप सब लोगों को जो पुणे के निवासी हैं उनके साथ मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को, ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर
जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहाँ पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है। वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहाँ पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मुरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है, जहाँ पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो हैं वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो इन तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मांडे नहीं जाना पड़ेगा, देश निकाला नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो
प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी। और इसके साथ साथ ही वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने जो गीता का वो लिखा, तो उनकी विशेषता ये है कि वो इन तीनों धाराओं का एक सम्मिश्रण थे, एक त्रिवेणी थी, जिसके अंदर में ये तीनों धाराएं प्रबल थी और हर एक अपने रूप में एक उसका कोई हमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ें, जो उन्होंने गीता का सार अपने उसके अंदर में लिखा है, जो वो है तो पढ़ने लायक है, जीवन को एक नई दिशा देता है। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था, जब मेरे पिता आर्मी में यहाँ पर पोस्टेड थे। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जो उससे पहले, या कुछ ही लोग होंगे जो उससे पहले पुणे में आए होंगे जब मैं आया, और मैंने अपना स्कूल की पढ़ाई यहीं से शुरू की। मैं लगभग 1.25 साल 1.5 साल यहाँ रहे, उसके बाद मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स में हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर रहा वो 1-1.5 साल। बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल गया, लेकिन 2 चीज़ें मुझे याद हैं। एक तो है हर मंगलवार को मेरी माँ का मुझे लेके चतुर्सिंगी देवी के मंदिर में जाना। वो हमारे यहाँ एक तरह की बड़ी मोटी सी रोटी बनाते, उसको रोट कहते हैं, उसको काटते थे, मीठी होती थी, उसके अंदर में उसका भोग चढ़ाते थे और कुछ और चीज़ों का भोग चढ़ाते, जो घर में आके हम लोग खाते थे, तो हमें अच्छा लगता था। उनकी बड़ी आस्था थी। All right, while addressing crowd in Pune, Home Minister Amit Shah stated that in every decision of PM Modi for national security, Ajit Doval has had a role and advice in the background. Now, after becoming PM, Modi ji made first appointment of his tenure by taking Ajit Doval as the National Security Advisor, that is the NSA. When he was the Chief Minister of Gujarat, he used to say, we need strong foreign policy, and he achieved that with Ajit Doval playing a key role, a strategic role. He said that Doval played a key role, and Amit Shah said that Doval played a role in every decision of Prime Minister Narendra Modi. So this is a very big statement by Amit Shah for Ajit Doval. Let's listen into the statement of Amit Shah. जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा, तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। मोदी जी गुजरात में थे, तब से चर्चा करते थे कि इस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है, और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है, उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। All right, so this was Amit Shah's statement for Ajit Doval. Said Doval played an important role in all the decisions of Prime Minister Narendra Modi, and he was the first appointment of Modi's tenure. So he was praising, he was hailing Ajit Doval, and he said that he played a key role in shaping the foreign policy of India. So this was a statement by Amit Shah for Ajit Doval.
And he has conferred the Lokmanya Tilak Award to NSA Ajit Doval also. All right, viewers, now it's time to slip into a short commercial break, but don't go anywhere because we have a lot more lined up for you. Coming up after the break, Asmita De, Harsh Singh make history as India's first gold medalists in judo at Commonwealth Games. Coming up next. Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. MTH का जलजीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने मास्टर कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. जेनजी की भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया? This week on Get Me Right, we take a look at election-bound Punjab and its dangerous appeasement politics
as Akal Takht takes center stage. Then the imperatives of tech sovereignty in the era of American big tech imperialism as Meta blocks Prime Minister Modi's post on Facebook. And finally, how India is resolutely burying the Indus Water Treaty amid Pakistani song and dance with methodical changing of facts on the ground. This weekend, Saturday and Sunday, only on Republic TV. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. But, we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan. Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. But, we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, because it was another smaller event. But no, they sent 8,000 mile-an-hour missiles at us. And fortunately, we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Nobody else could do that but us, yeah. US forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on US forces based in the Middle East. The escalation comes after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed responsibility for a missile attack on a US airbase and command center in Jordan. The US military says all the missiles were intercepted. Even as airstrikes continue, CENTCOM says it is strictly enforcing the American blockade against Iran. As of July 29, US forces have redirected 20 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2 others. With Washington and Tehran exchanging attacks once again, fears of a wider conflict in the Middle East are growing. The big question now is whether the confrontation will stop here or spiral into a larger war.
afternoon. We are live and we are breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest coming in. We are tracking multiple stories here. Especially we have told you that according to the latest coming in, the mastermind behind the Kulgaon terror attack was also behind the Pahalgam attack. That's one of the top updates we're getting for you. But the headlines first. Let's get started. Headlines brought to you by Canara Bank. Together we can. 2 laborers killed in terror attack in Kulgaon. Massive search operations underway to neutralize terrorists. Pahalgam rerun in Kulgaon. Hindus targeted by terrorists in dastardly terror attack. Mastermind behind Kulgaon terror attack identified as Lashkar's Sergeant Jatt, the same terrorist behind the cowardly Pahalgam attack of 2025. सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। PM says punishing young people serves no purpose, appeals for forgiveness, reconciliation and a constructive path forward. Ruchika Singh, who abused PM Modi during the CJP protest at Jantar Mantar, now apologizes to Prime Minister Modi. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav warns against religious conversion and says those involved in religious conversion in tribal areas will be jailed. FCRA bill to be tabled in Lok Sabha next week. Amit Shah to lead the debate. Ashmita De Harsh Singh make history as India's first gold medalist in judo at Commonwealth Games. Asmita De is a 23-year-old from Tripura, becomes the first Indian to win gold medal in judo. Neeraj Chopra wins silver. Yashveer Singh bags bronze at Commonwealth Games in javelin throw in Glasgow. India's total tally is now 23. Viewers, let's go ahead and tell you the big story that we're tracking right now. There has been a big development. CBI has booked Anil Ambani, Reliance Capital in rupees 1,816 crore EPFO fraud case. CBI has registered an FIR against Reliance Capital Limited, former chairman Anil D. Ambani, unknown public servants and others over an alleged EPFO investment fraud involving rupees 1,816.22 crore. According to the CBI, EPFO invested 2,500 crore in Reliance Capital's secured NSDs during 2013 to 14. Now, the agency alleges fraudulent fund diversion led to a default in redemption, causing a wrongful loss of rupees 1,007.55 crore, along with 808.67 crore in interest liability. So we see, viewers, it's a big trouble coming in for Anil Ambani. We will go straight across to my colleague who's joining us. Let's go straight across to my colleague Rishita, who's joining us live from a Republic newsroom. Rishita, I'm coming across to you, and then we'll go across to Atul as well. Now, this is a serious fraud which has taken place here, and the CBI is investigating. In fact, the investigation is underway to trace the end use of funds and identify the role of all accused.
Right, absolutely, Shivangi. Now, this is a rupees 18,016 crore rupee fraud that has been done. So, the CBI has registered an FIR not just on the chairman Anil Ambani, but also other unknown public servants and others who have been involved in this EPFO investment fraud. This involves rupees 18,016.22 crores. According to the CBI, EPFO invested rupees 2,500 crores in Reliance Capital secured NCDs during 2013 and 14, which were to be matured, but the agency alleges that the fraudulent fund division has caused them a wrongful loss of rupees 1,007.55 crores. Now, it also needs to be noted that the statement has said that it has earlier registered 7 FIRs against Reliance Communications Limited, Reliance Home Finance Limited, Reliance Commercial Finance Limited, and Reliance Telecom Limited. This has been the update so far. We have been tracking this news very closely, and we'll be back with the updates shortly. Back to you for now. That's right. I also want to go across to Atul, who's joining us live from New Delhi. Atul, I'm coming across to you right now, and we understand that the accused persons indulged in fraudulent transactions, diversion of funds, resulting in the default in redemptions of the NSDs by Reliance Capital Limited. Now, overall, it looks like a very complicated case, but if you could just tell our viewers and really break down what exactly is this fraud all about? Well, the actual wrongful loss is about rupees 1,000 crore, whereas the 800 crore is the interest of this. So total is 1,800 crore rupees loss, which the consortium of banks suffered. The EPFO lodged a complaint with the Federal Probe Agency, which is the CBI, and the CBI initiated a PE. Based on the PE, the CBI lodged an FIR against Anil Ambani, unknown servants, and the firm. And now, in coming days, the CBI which sent them someone to join the investigation. Apart from this, the CBI, in earlier connected cases, they have filed 4 charge sheets against Ambani, and this is the fresh case which was lodged yesterday. Yes. Well, thank you for joining us with all those details. I want to thank both my colleagues, Atul and Rishita, for getting us the big update coming in. Anil Ambani is in big trouble. Now, we will also move ahead, viewers, to some of the other stories we're tracking. A day after the terror attack by Lashkar Front that killed 2 civilians in Gurgaon, 2 controversial statements have been made by the National Conference. Minister Javed Rana is now calling for talks with Pakistan a day after the terror attack. Meanwhile, Farooq Abdullah links a terror attack to statehood demand. So once again, we see controversial remarks are being made. I repeat, now this is coming just one day after the dastardly terror attack by Lashkar Front that killed 2 civilians in Gurgaon. And after that, viewers, we are coming to know that the NC is making a couple of statements. They're calling for talks with Pakistan. This is something that some leaders of the NC have been repeating again and again. And Farooq Abdullah linking the terror attack to this demand for statehood. जो है क्या आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग जो है वो स्टेटहुड की डिमांड से लिंक कर रही है, क्योंकि आज सुबह रिपब्लिक से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा? कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि यहाँ क्योंकि देश की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने इस बात का क्रेडिट भी लेना चाहा कि हमने 370 को तोड़ के रियासत को डिग्रेड करके हालात ठीक किए हैं, और हालात ठीक नहीं हैं। ये किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है। तो ये कहीं भी ये चीज जा सकती है। मैंने पहले भी कहा, मैं डिमांड करता रहा हूं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन यहां बैठाया जाए और इन सब चीजों को देखा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का। पाकिस्तानी आतंकियों का नाम भी आ रहा है इसमें, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान पे तो कोई एतबार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो हमेशा इंट्रिग करता रहा है 47 से लेकर आज तक, और पाकिस्तान तो लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा? पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे कंट्रोल हो? 56 इंच का सीना तो आपके पास है। कंट्रोल कैसे करेंगे? 56 इंच का सीना इस्तेमाल करें ना सर। टॉक्स होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, इसको टॉक्स होनी चाहिए। टॉक्स में अगर आप 56 इंच का सीना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बातचीत करें। ये अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
सर, अटैक हुआ, 2 कुलगाम में जो है नॉन लोकल्स मारे गए हैं। सुरक्षा अमरनाथ यात्रा के दौरान दोनों जो हैं बाहरी थे। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, ये उग्रवाद की जो रोज उग्रवाद से जो किलिंग हो रही है, अब इस पे बयान दे दे के हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग थक गए हैं। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमारा दिल ही नहीं करता हम इस पे बयान दें। जब एक साइड सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि उग्रवाद खत्म हो गया, और आप लोग ही दिखाते हैं कि आज इस इलाके में 2 मिलिटेंट रह गए, उसमें 3 मिलिटेंट रह गए, उसमें 4, और खुद कहीं पीछे कुलगाम में तो कहते थे सफाया हो गया है, मिलिटेंट है ही नहीं है वहां पे। तो फिर ये 2 लोग कैसे मारे गए? चंद रोज पहले एक हमारा सिपाही जो है वो अनंतनाग में शहीद हो गया, कैसे मारा गया? ये कौन लोग हैं? कौन लोग ये किलिंग कर रहे हैं? उग्रवादी हैं या कौन से लोग हैं? जब भी स्टेट का दर्जे की बात शुरू होती है कि स्टेट का दर्जा बहाल करो, कोई ना कोई किलिंग हो जाती है। हम तो अब इसको इस नजर से देखना शुरू हो गए हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जम्मू कश्मीर में एक हाई लेवल इंक्वायरी करिए इन मुद्दों पे कि ये किलिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। एक साइड जब सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि हालात ठीक हैं, और जब दूसरी साइड, अब तो यहां जम्मू कश्मीर में यूटी है, अब तो स्टेट है नहीं, अब तो सीधी सेंटर के हवाले सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो फिर किलिंग कैसे? आगे तो कहते थे ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन कराते हैं, तो अब कैसे हो रहा है? ये उग्रवाद कहां से आ रहा है? इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि होम मिनिस्टर साहब से, कि जब 22 सरन में हुआ, पुलवामा में हुआ, उस समय ही एक हाई लेवल इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी और सामने ऐसा चाहना चाहिए। आपने कहा कि जैसे स्टेट की बात आती है तब किलिंग शुरू हो जाती है, आपको क्या शक लगता है कौन हो सकता है? मैंने यही तो कह रहा हूं, क्योंकि हम शक करना शुरू हो गए। अभी हम जंतर मंतर पे धरना दे के आए हैं चंद रोज पहले, और इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। 2.25 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। हम लोग जंतर मंतर में गए, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अलायंस पार्टनर हमारे हैं या इंडिपेंडेंट जो ऑनरेबल एमएलए हैं, वो लोग, हम लोग गए वहां, धरना दिया। जब धरना दे के वापस आते हैं, अनंतनाग की किलिंग हो जाती है, यहाँ आपकी कुलगाम में रात को किलिंग हो गई। हमें दुख है कि ये नाजायज लोग मारे जा रहे हैं। उन घरों को पूछिए जिन घरों में ये लोग शहीद हो रहे हैं, जिन लोगों के घरों में ये डेड बॉडियां जा रही हैं, आम लोगों की। ये छोटी बात नहीं। आप अनंतनाग जब वो पुलिस वाला शहीद हुआ, उसके परिवार कैसे बिलख बिलख रो रहा था। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के लोग रोएंगे? आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में आखिरी मिलिटेंट मरेगा? अब आपने तजुर्बा भी कर लिया, आपने स्टेट को तोड़ के यूटी भी कर दिया, स्टेट को तोड़ के जो स्पेशल स्टेटस था 370-35 भी तोड़ दिया। 5 अगस्त 2019, कितने साल हो गए आपके? आज 6 साल हो गए इसको तोड़े हुए, अभी भी अगर किलिंग हो रही है तो एक सवाल खड़ा होता है। आप जी सर मीटिंग ले रहे हैं 11 बजे सिक्योरिटी रिव्यू। यार रोज मीटिंगें तो रोज सुनते हैं, मीटिंगों से बात नहीं। आखिर ये कौन है, कैसे हो रहा है, किसके लेवल पे लैप्स हो रहा है? एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फाइनल आप स्ट्राइक करिए उन लोगों पे, उन ऑफिसरों पे जिनकी क़यादत में, जिनकी लीडरशिप में ये हो रहा है। एलजी साहब को फ्रंट फुट पे आना होगा। अब रोज रोज हम कितना इसको अफसोस करें, रोज कितना कितना कभी फूल चढ़ाएं। हम भी थक गए हैं कि हम फूल चढ़ा के इन लाशों के ऊपर, बेचारे इन डेड बॉडियों के ऊपर। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग थक चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं कोई एजेंसी का आदमी तो हूं नहीं, ये तो आप मीडिया के लोग और एजेंसियों को जाके पूछिए, और जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं उनको पूछिए कौन हो सकता है। And viewers, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha chaired a high-level security review meeting today. In fact, the Lieutenant Governor directed all the Deputy Commissioners and the SSPs to conduct a comprehensive review of the standard operating procedures established to protect labourers from outside Jammu Kashmir. In fact, he also directed that the employers must ensure all workers from other states and UTs of the country are provided insurance and that their details are registered with local police and district authorities. Let's go straight across to my colleague Gursimran. Gursimran, in that security review meeting, we saw that the LG has conducted a top-to-bottom audit of the entire security apparatus. He has given some directions as well to make sure that the non-locals and the labourers who are working in Jammu and Kashmir remain safe.
Yes, Shivangi, you have rightly mentioned that LG Manoj Sinha has held a security review meeting in which a threadbare discussion has taken place on the security apparatus, as well as directions have been passed to the deputy commissioners to ensure that the standard operating procedures for the security of these migrant workers in Jammu and Kashmir is followed thoroughly, and also the owners of the brick kilns or any other establishment that is having the migrant workers as their employees, they should also bring in all security measures and also insurance for their employees. But this meeting could not be seen in a standalone environment because there is a larger threat. I'm repeating that the agencies have warned of. Agencies have said that this is just a start of the series of terror attacks that have been planned by Lashkar-e-Toiba by its commander Sajid Jatt sitting across the border. Same Sajid Jatt who is instrumental and one of the key conspirators of Pahalgam terror attack. He is basically presently based in Lahore and is operating from there. He has been there in Kulgam for 2 years, 2005 to 2007. So that threat is in the minds of the security forces, and the regular inputs have actually forced the establishment to go to these kind of directives and to hold an emergency security assessment meeting, because this is the first killing of the civilians, non-locals post Operation Sindoor, which means that the Pakistani establishment and the Pakistani terror groups have given a go-ahead to its terrorists in Jammu and Kashmir to go and target the civilians, target the security forces, which is a real concern for the establishment of Jammu and Kashmir Lieutenant Governor as well as the law enforcing agencies. And now we have seen that the established SOPs are being strengthened and also the security has been beefed up. But the major threat continues to be Latif, one of the attackers who is involved in this attack, also suspected to be in the attack that has been carried out in Anantnag. This 21-year-old terrorist is one of those who has escaped from the Shopian encounter on July 8 when his associate Zakir Ganai was killed. So now the security forces' prime focus is on Latif Bhatt so that he can be neutralized at an earliest, and the directions have been passed by the LG Manoj Sinha. That's right. Well, thank you for getting us all those details. Good, sir. We'll be coming back to you for more. Let's move ahead, viewers. Now, the prices of commercial LPGs finally sees a reduction, thus giving the traders a sense of relief. The price reduction comes into effect in major cities like Delhi and Kolkata, where the price of the cylinder has reduced by more than rupees 200. Take a look. The central government on Saturday announced a reduction in the prices of commercial LPG cylinders, providing a relief to the traders. Metro cities like Delhi and Kolkata saw an immediate effect, with prices reducing by more than rupees 200. The price of the 19 kg commercial cylinder in Kolkata is now at rupees 2,872.50, while Delhi sees a reduction with rupees 202 cut from the actual price. This comes even as the West Asia war continues to impact global energy supplies amid disruption at the Strait of Hormuz. The war has impacted the daily life of workers and households who were dependent on LPG for their daily survival. Getting you some big breaking news coming in, viewers. And now, one more medal for India. Boxer Preeti has won gold. Preeti Pawar defeats Scarlett Savannah Delgado of Canada in the final of the women's 54-kilogram boxing event on Saturday. To win a gold medal for India at the ongoing Commonwealth Games 2026. So big news coming in for our viewers, and we see that one more gold for our country. We see that already we have a great medal tally of 23. Now it has gone up by one more medal. So back-to-back updates coming in here, viewers, on Republic TV, where we see that Preeti Pawar has won the gold. Her opponent was Scarlett Delgado. And once again, India winning one more medal, continuing the great performance in the Commonwealth Games. So one more reason for every Indian to be proud just right now as we speak, viewers. We have seen that boxer Preeti Pawar winning a gold for India at the Commonwealth Games in 2026. It's day 9 of the 2026 Commonwealth Games. We can see that it's a medal-heavy affair for India.
and we have seen it's a stunning day. Day 8 was a stunning day where India won 6 medals when Neeraj Chopra, Yashveer Singh in javelin, Tejas Shankar in decathlon, Asmita Dey, Harsh Singh and Yamini Maurya in judo. And now we are coming to know that one more medal for India on day 9 of the Commonwealth Games. It's a big win for India, where we see that India is performing extremely well. Our sportsmen and women winning medal after medal, especially after day 8, which was yesterday, and we saw 6 medals. India won 6 medals in one day, that was yesterday, and today another gold medal for India at the Commonwealth Games 2026. Record, I repeat, record number of medals are being won. I want to go close to my colleague Rakshita, who's joining us right now. Rakshita, it was a memorable day yesterday when India won back-to-back medals, and today as well a gold for India. Absolutely. In fact, India had an impressive 23 medal haul yesterday itself. 5 gold, 12 silver and 6. And now another gold has been added with Preeti Pawar. She's a Naib Subedar in the Indian Army. And she has defeated a strong opponent. And she has clinched gold for India. So India's golden run continues. In fact, last night we also saw how India had a double medal in javelin. Also silver and bronze in India's name, Neeraj Chopra and Yashveer clinching it for India. So yes, medals galore. And as far as boxers are concerned, India has been doing exceptionally well in boxing over the years. And this time around, we have more and more boxers, at least 10 of them in the finals. And this was one such example of how well we are doing and how our Indian boxers are making strides. So yes, Preeti Pawar has done it in the final. She has now clinched the gold medal here. So it takes the medal tally to another gold, to 6 golds now that we have now we have gathered in our kitty. And of course, it's going to be one exciting Saturday today also, because there are a lot of Indians in the reckoning for the podium finish as well. That's right. Rakshita, stay on with us. India is currently placed 10th in the overall medal standings the last time we checked. So last time was 23 medals. Now I think we have 24 medals in total, and not a bad spot for India this time around. Absolutely. You have to also not forget Asmita Dev, who has clinched the maiden gold medal in judo. A very young athlete, very young athlete who has made India proud. In CWG, we've seen that India has been only improving the tally with every edition of the Commonwealth Games. And this time around, once again, India is in the medal spot for more such finals in boxing also. So yes, India has been making strides in even those sports where India were not even heard of making the cut. So yes, this time in judo, we saw what happened after javelin. In Olympics, once Neeraj Chopra clinched that gold medal, it was the first in independent India that India had a medal in athletics, and that too a gold medal. And after that, we saw that there were so many of javelin throwers who were following suit, who were following Neeraj Chopra, that brought in a revolution as far as athletics are concerned. And we see more and more medals in athletics, apart from sports like boxing or wrestling or weightlifting. Mirabai Chanu has been India's most shining weightlifter. So we have icons who are being supplemented. We have more and more icons now. We don't have just one name. That's the best part. We have stars galore. We have entire galaxy of sports stars now who are right now shining very bright in Glasgow. That's right. Well, thank you for joining us with all those details. Rakshita, my colleague, getting us the good news. One more medal for India, taking the gold tally to 4 now. Silver 10, bronze 4. Much for coming up, viewers. Coming right up, we'll talk about what we'll expect next week. FCRA bill to be tabled in Lok Sabha next week. Amit Shah to lead the debate. Stay tuned. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट।
ड्राई फ्रूट और दो ही बड़े। चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे। प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. जेनजी की भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Very good evening. We are live and we are breaking this Saturday. I'm Shivangi Shukla getting you the latest coming in. Good news for all our viewers. India has won one more gold at the Commonwealth Games. We'll tell you all about it, but the headlines first. Let's get started. Headlines brought to you by Canara Bank. Together we can.
Two laborers killed in terror attack in Kulgaon. Massive search operations underway to neutralize terrorists. Pahalgam rerun in Kulgaon. Hindus targeted by terrorists in dastardly terror attack. Mastermind behind Kulgaon terror attack identified as Lashkar Sergeant Jat, the same terrorist behind the cowardly Pahalgam attack of 2025. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। PM says punishing young people serves no purpose, appeals for forgiveness, reconciliation and a constructive path forward. Ruchika Singh abused PM Modi during CJP protest at Jantar Mantar, now apologizes to PM Modi. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav warns against religious conversion and says those involved in religious conversions in tribal areas to be jailed. FCRA to be tabled in Lok Sabha next week. The bill will be tabled. Amit Shah to lead the debate. After Shmita Day and Harsh Singh, Preeti Pawar bags gold in Commonwealth Games. Shmita Day makes history at Commonwealth Games as 23-year-old from Tripura becomes the first Indian to win medal in judo. Neeraj Chopra wins silver. Yash Veer Singh bags bronze at Commonwealth Games in javelin throw in Glasgow. India's total tally is now 24. So viewers, good news coming in. Boxer Preeti wins gold. Preeti Pawar defeated Scarlett Savannah Delgado of Canada in the final of the women's 54-kilogram boxing event to win a gold medal for India at the ongoing Commonwealth Games 2026. It's a huge update coming in, viewers. Preeti Pawar started India's medal counter a short while ago at Glasgow Commonwealth Games. And she has won gold in the Commonwealth Games. She's defeated Scarlett Savannah Delgado of Canada. It's a blockbuster day. And look at the medal tally. We have got one more medal. Now the gold tally is 7, silver at 12, bronze at 6. A short while back, we have got to know that there's one more. Another gold for India. Jasmine has won a gold in women's 57-kilogram boxing category. That means the total number of golds is now 7. Back-to-back updates coming in here, viewers. 2 back-to-back golds, one shortly by India. Stunning in a stellar performance by India on day 9 of the Commonwealth Games. 24-year-old Jasmine defeated Michaela Walsh of Ireland in a split decision on Saturday. Short while back to win India's second gold medal at the ongoing Commonwealth Games 2026. So 2 back-to-back golds coming on the same day, viewers. And this is a huge update coming in on Republic TV because we see that this is a blockbuster day as Indian boxing is showing their best performance. I repeat, their best performance. We see 10 boxers are competing in the finals today in various weight classes at the Commonwealth Games. So 2 golds have come in. When we talk about boxing, our Indian boxers and our female Indian boxers really outperforming there. So the gold tally 7, silver 12, and bronze at 6 medals. Huge update coming in, viewers. India shining at the Glasgow Commonwealth Games with historic golds and historic judo golds which came in yesterday. India delivering huge performances which are extremely doing well in terms of winning these medals. They've clinched historic goals. For example, yesterday 2 historic goals came in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw. And India also won its first ever bronze medal in decathlon.
and booking places for 10 boxers in their respective finals, and that is happening today. We see that 2 gold medals have come in when it comes to boxing. Huge updates coming in here, viewers of Republic TV, and we will see right now. Last time we heard India's tally was 25, and looks like India will be moving up the points table. Big updates coming in here, viewers of Republic TV. India's boxers delivering an outstanding performance, with many of them have cleared semi-final bouts. Now 2 gold medals have come in already for India. So India performing extremely well at the Commonwealth Games, viewers, and some historic medals have also come in. Let's put out some of the visuals coming in of celebrations. Now Preeti Pawar celebrating there, the family celebrating the win. Preeti Pawar, of course, making India extremely proud. She has started India's medal counter a short while back at the Glasgow Commonwealth Games with a gold in the women's 54-kilogram event by defeating Scarlett Savannah Delgado of Canada with a unanimous decision of 5-0. It's a blockbuster day, and the entire family celebrating the win. This is the family of Preeti Pawar who are celebrating the win. Let's go ahead and play other reactions. बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही। कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं जी। फिर शुरू में खेलना पसंद कौन था ये प्रीति ने, और या इस खेल में करी थी कि इसके काका कोच थे, इसके बॉक्सिंग के कोच, उनकी वजह से इसमें लेना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ सका। एक तो घर के हो गए कोच, खुद घर के कोच हो गए, और पहले 8-10 साल पहले सोचा कर दे कि भाई छोरियाँ का थोड़ा बाहर ले जाना में घर का पता और भी वो हो जाओ है विश्वास। उसकी वजह से कुछ दिन तक तो कठिनाइयाँ इतनी हो, इसका मन नहीं कर रहा था बॉक्सिंग करना। फिर आगे खेल दी गई, हार भी हुई हैं, जीत हुई। जब इसका हौसला बढ़ता गया और बढ़ता अब इस टाइम पे यहाँ पे आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, और पता था, हमें तो पता ही था कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, और पता था, हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी। उसकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है, उसकी मेहनत पे भरोसा था हमें कि वो जीत के लाएगी, गोल्ड भी लाएगी, और बस अभी खुशी हो रही है कि उसने वो कर दिखाया। उसकी जर्नी टफ भी रही है काफ़ी, बट उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। अभी भी मैं उसकी बड़ी बहन होके, लेकिन मेरी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो प्रीति है। Right, Preeti Pawar's family celebrating the taste of victory. This is not a victory just for Preeti Pawar's family, but it's a victory for every Indian, especially every Indian who's watching right now. In fact, Prime Minister Modi has congratulated all these winners, and he's congratulated Harsh Singh of winning gold in judo. He has congratulated all these Indian medalists over the past few days. He's congratulated Neeraj Chopra, Yashveer Singh, and Yamini Maurya on the medal wins. And we're coming to know that India has once again won some more medals. I repeat, India has won 2 more medals at the Commonwealth Games. India has won a silver and a bronze in the triple jump. So big updates coming in here, viewers of Republic TV. Back-to-back updates coming in. After the gold rush in boxing, India gets silver and bronze in the triple jump event. Selva Prabhu wins a bronze medal for India in triple jump. Praveen also winning the silver for India in triple jump. Praveen C winning the silver, and that means that our medal tally has got even higher. I repeat, our medal tally has got even higher, viewers. So this is a gold rush, and it's a medal rush for India. Starting off with 2 golds, now 2 more medals have come in for India. Let's look at the tally for our country. Gold 7, silver 13, bronze at 7. Look at that medal tally, viewers. Indian boxers, Indian athletes today
adding more and more medals in India's kitty. This is a huge update coming in, viewers, on Republic TV, where we see India shining at the Commonwealth Games. Indian athletes making every Indian extremely proud today. So that was all the good news coming in. Let's take a look at some of the other stories. We're tracking the prices of commercial LPGs finally sees a reduction, thus giving the traders a sense of relief. The price reduction comes into effect in major cities like Delhi and Kolkata, where the price of the cylinder has been reduced by more than rupees 200. The central government on Saturday announced a reduction in the prices of commercial LPG cylinders, providing a relief to the traders. Metro cities like Delhi and Kolkata saw an immediate effect, with prices reducing by more than rupees 200. The price of the 19 kg commercial cylinder in Kolkata is now at rupees 2,872.50, while Delhi sees a reduction with rupees 202 cut from the actual price. This comes even as the West Asia war continues to impact global energy supplies amid disruption at the Strait of Hormuz. The war has impacted the daily life of workers and households who were dependent on LPG for their daily survival. We was getting you some more updates coming in. Authorities in Nepal's southern plains have eased curfews in many areas after a week of tension and violence. Curfew was lifted in parts of areas just like in Sihraha, while restrictions remain in Gol Bazar due to security concerns. Although curfews have been relaxed, gatherings of more than 5 people, rallies, demonstrations and public meetings remain banned in many areas. Harmony rallies have been organized to promote peace and unity. Officials said the situation is gradually returning to normal and urged people to follow restrictions to maintain peace and communal harmony. Violators will face legal action. Nepalese Prime Minister has also called for calm after clashes between Hindu and Muslim groups in the country's south have left 3 people dead. Shah, who has rarely appeared in public since taking office in March, broke that silence on Thursday with his first major address to the nation. He urged citizens to act responsibly and help remove the clouds of unrest. So, pictures are coming in on your screen. These are the pictures showing you riots in Nepal. And there has been an appeal made for peace in the region. This is one of the biggest flashpoints that we are seeing in Nepal in years. Violence had begun and spread across multiple regions. And viewers, let's move ahead right now to some of the other stories we're tracking coming in. Just after the terror attack by Lashkar Front that killed 2 civilians in Kulgaon, 2 controversial statements have been made once again by the National Conference. National Conference Minister Javed Rana is now calling for talks with Pakistan a day after the terror attack. Meanwhile, Farooq Abdullah links a terror attack to statehood demand. Now, this is very important for our viewers to understand because we have seen that the NC leaders have again and again pushed for talks with Pakistan, and in the same time, they have been making calls for statehood. In fact, they were in Delhi holding a protest over the same issue. Let's go ahead and play out the reactions. एक सवाल जो है, क्या आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग जो है वो स्टेटहुड की डिमांड से लिंक कर रही है? क्योंकि आज सुबह रिपब्लिक से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा। कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि यहाँ क्योंकि देश की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने इस बात का क्रेडिट भी लेना चाहा कि हमने 370 को तोड़ के रियासत को डिग्रेड करके हालात ठीक किए हैं, और हालात ठीक नहीं हैं। ये किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है। तो ये कहीं भी ये चीज जा सकती है,
मैंने पहले भी कहा, मैं डिमांड करता रहा हूं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन यहां बैठाया जाए और इन सब चीजों को देखा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पाकिस्तानी आतंकियों का नाम भी आ रहा है इसमें, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान पे तो कोई एतबार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो हमेशा इंट्रिग करता रहा है 47 से लेकर आज तक, और पाकिस्तान तो लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा? पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे कंट्रोल हो? 56 इंच का सीना तो आपके पास है, कंट्रोल कैसे करेंगे? 56 इंच का सीना इस्तेमाल करें ना सर। टॉक्स होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, इसको टॉक्स होनी चाहिए। टॉक्स में अगर आप 56 इंच का सीना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बातचीत करें। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। सर, अटैक हुआ, 2 कुलगाम में जो है नॉन लोकल्स मारे गए हैं सुरक्षा अमरनाथ यात्रा के दौरान, दोनों जो है बाहरी थे। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, ये उग्रवाद की जो रोज उग्रवाद से जो किलिंग हो रही है, अब इस पे बयान दे दे के हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग थक गए हैं। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमारा दिल ही नहीं करता हम इस पे बयान दें। जब एक साइड सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि उग्रवाद खत्म हो गया, और आप लोग ही दिखाते हैं कि आज इस इलाके में 2 मिलिटेंट रह गए, उसमें 3 मिलिटेंट रह गए, उसमें 4, और खुद कहीं पीछे कुलगाम में तो कहते थे सफाया हो गया, मिलिटेंट है ही नहीं है वहां पे। तो फिर ये 2 लोग कैसे मारे गए? चंद रोज पहले एक हमारा सिपाही जो है वो अनंतनाग में शहीद हो गया, कैसे मारा गया? ये कौन लोग हैं? कौन लोग ये किलिंग कर रहे हैं? उग्रवादी हैं या कौन से लोग हैं? जब भी स्टेट का दर्जे की बात शुरू होती है कि स्टेट का दर्जा बहाल करो, कोई ना कोई किलिंग हो जाती है। हम तो अब इसको इस नजर से देखना शुरू हो गए हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जम्मू कश्मीर में एक हाई लेवल इंक्वायरी करिए इन मुद्दों पे कि ये किलिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। एक साइड जब सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि हालात ठीक हैं, और जब दूसरी साइड, अब तो यहां जम्मू कश्मीर में यूटी है, अब तो स्टेट है नहीं, अब तो सीधी सेंटर के हवाले सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो फिर किलिंग कैसे? आगे तो कहते थे ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन कराते हैं, तो अब कैसे हो रहा है? ये उग्रवाद कहां से आ रहा है? इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि होम मिनिस्टर साहब से, कि जब 22 में हुआ, पुलवामा में हुआ, उस समय ही एक हाई लेवल इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी और सामने ऐसा चाहना चाहिए। आपने कहा कि जैसे स्टेट की बात आती है तब किलिंग शुरू हो जाती है, आपको क्या शक लगता है कौन हो सकता है? मैंने यही तो कह रहा हूं, क्योंकि हम शक करना शुरू हो गए। अभी हम जंतर मंतर पे धरना दे के आए हैं चंद रोज पहले, और इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। All right, let's go straight across to Major General G.D. Bakshi, defense expert, who's joining us on the phone line. Major General, what we see after the dastardly Kulgaon terror attack, we have seen that the National Conference once again is pushing for talks with Pakistan. Now, we have seen them push for talks with Pakistan again and again, year after year. This is something very, very important because Rajnath Singh, Defense Minister, has said that what happened in Operation Sindoor is the kind of talk that Pakistan really needs, nothing more. He is absolutely right. The only kind of talk that we need to do Pakistan is through the bloody guns. What is the doubt about the sovereignty of India and the inclusion of Kashmir in India? Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession legally, period. Finished. Finito. No further bloody questions or answers. It is you want to talk to Pakistan, you get lost, you go to Pakistan, but you settle down there and you will see what is happening to the people of POK. Haven't you seen that? आपको गोली खानी है पाकिस्तान की फौज की? You know, the bloody simple fact is, every year during the Yatra season, the Pakistani ISI, the Pakistani terrorist modules try and finger. You know, when the passes open, when the snow melts, their infiltration routes open and they try and get through. You cannot hermetically seal a border. 1 or 2, 3 or 4 will get through at various times. Right. The answer is to attack onto the other side and make sure he is deterred from doing this.
Instead of that, these people want us to talk to them, to encourage them to send more. And they want to come into power, have full power in Jammu and Kashmir so that they can encourage, facilitate infiltration. Yes, sir. They have made an industry out of it. Absolutely, sir. Trying to oppose the Indian government, trying to oppose the Indian state, and trying to take advantage of every little terrorist incident to come with Pakistan, surrender to Pakistan. We've sorted out Pakistan. Can you leave it to us? You worry about your own job. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, sir. Major General G.D. Bakshi, defense expert. Thank you for joining us here on Republic TV. Taking a short break, viewers, do not go anywhere. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav warns against religious conversion and says those involved in religious conversions in tribal areas to be jailed. Stay tuned. केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। रानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MTH का जलजीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan. Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, because it was another smaller event. But no, they sent 8,000 mile-an-hour missiles at us, and fortunately we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Nobody else could do that but us, yeah. US forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on US forces based in the Middle East.
The escalation comes after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed responsibility for a missile attack on a US airbase and command center in Jordan. The US military says all the missiles were intercepted. Even as airstrikes continue, CENTCOM says it is strictly enforcing the American blockade against Iran. As of July 29, US forces have redirected 20 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2 others. With Washington and Tehran exchanging attacks once again, fears of a wider conflict in the Middle East are growing. The big question now is whether the confrontation will stop here or spiral into a larger war. अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुई हैं और वो नारा देते प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MTH का जलजीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्योर मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुई हैं और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने मास्टर एक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित UPA ने पॉलिसी वैक्यूम करा,
वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. जेनजी की भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग। We are seeing what's happening in national capital and throughout the country from last 1 year. And हम लोग नेशनल कलेक्टिव के स्टेज पे हैं, हम लोग रिपब्लिक के स्टेज पे हैं। मेरी टीवी की जर्नी शुरू हुई 2017 से, जब रिपब्लिक टीवी भी शुरू हुआ। एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट अर्नब इज़ दैट व्हाट्स डिफरेंट इज अर्नब्स कमेंट्री दैट ही ऑफर्स सोल्यूशन। क्योंकि चिल्लाना तो बड़ा आसान है कि ये हो गया ख़राब, वो हो गया ख़राब। तो ये जो पूरा मामला है जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, उस पर आपने सोल्यूशन सुना क्या कभी तक? किसी ने सोल्यूशन सुना कि भाई पेपर तो आपने सबने कोई तो पेपर लिखा ही है, सबने अपने स्कूल के एग्ज़ाम लिखे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे हैं। भारत में एग्ज़ाम नहीं होते, वर्ल्ड ओवर देयर एग्ज़ाम्स, राइट। दीपके जी तो अमेरिका से आए हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होते हैं उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो दिखते हैं, जो लेफ्ट पार्टीज से हैं, उनकी जो सो कॉल्ड उनकी जो आइडियल कंट्री है चाइना, वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन एंड देखते हैं भारत कहाँ खड़ा है उसमें। और हम थोड़ा संवाद रखते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी हैं, युवा भी हैं। अभी तक जो आपने देखा, आपने सोल्यूशन सुना क्या कोई? अगर मैं वहाँ पे चिल्लाऊंगा कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, उससे नीट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? अगर मैं ब्राह्मणों को गाली दूंगा वहाँ पे खड़े होकर, तो मेरा नीट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज को सुनते होंगे, वहाँ पे प्रेमानंद महाराज को गाली दी गई, उससे नीट का पेपर सॉल्व होगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। वहाँ गंदी मतलब मैं गाली तो क्या, उसका टाइटल भी नहीं बोल पाऊँगा, वो आपने सुनी होंगी रील्स में, उससे नीट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं सॉल्व होगा। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ। हम लोग हिस्टोरियंस हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ें, कि एग्ज़ाम में चीटिंग करना तो नई बात नहीं है। अभी आपने एक कैजुअल स्टेटमेंट सलमान खान का सुना होगा, अभी किसी में वीडियो में वायरल हो रहा था कि कैसे उनके पास एग्ज़ाम का लीक का पर्चा आ गया और उन्होंने एग्ज़ाम लिख दिया अपना। मतलब सलमान खान इस समय 60 साल के हैं, जब वो एग्ज़ाम देते होंगे तो 40 साल पुरानी बात है। मतलब 40 साल पहले भी पेपर लीक होते थे, चीटिंग हुआ करती थी। भारत में पहली बार, थोड़ा क्विज भी खेलेंगे, पहली बार अगर किसी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में चीटिंग, नकल, पेपर लीक, इसके विरुद्ध कानून बनाया, किसने बनाया? कुछ याद आ रहा है? बल्कि अभी भी अब जिस स्टेट में हैं हम, उसी ने बनाया, किसी ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने। और पहले कल्याण सिंह, बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। तो कल्याण सिंह ने 1992 में चीटिंग के खिलाफ पहला, भारत में कहीं भी सेंट्रल में कोई कानून नहीं था, किसी स्टेट में कोई कानून नहीं था। देखिए, आप कितनी भी बड़ी गलती कर दें, पुलिस आपको तभी पकड़वाएगी जब उसके खिलाफ कानून होगा, क्योंकि चीटिंग करना कोई गलती नहीं मानी जाती थी। मैं डांट सकता हूँ, अलग बात है, मैं आपको एज ए मास्टर, एज ए टीचर उठा के यहाँ बिठा दूँ, वहाँ बिठा दूँ, लेकिन मैं आपको कानून में तभी बुक कर सकता हूँ अगर उसके खिलाफ कोई कानून हो। तो पहली बार 1992 में यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बना और चीटिंग को आप मानेंगे नहीं, मतलब जो पासिंग परसेंटेज था यूपी स्टेट का, वो मात्र 20% रह गया। मतलब 20% लोग ही पास हुए। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं कल्याण सिंह के समय का 12th पास है मेरा, मतलब बिना चीटिंग वाला। आज भी आपको लोग मिल जाएंगे ना, मतलब दे विल ऐड की इतनी परसेंटेज है, वो कहेंगे 64 है, बट ब्रैकेट में कल्याण सिंह एरा, राइट, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, वो आपको सुन के मतलब आपको आश्चर्य भी होगा, आप सोचेंगे कि मतलब मेरा सिर फोड़ें कि अपना सिर फोड़ें। अगली बार उसके बाद बाबरी ढांचा गिरा और सरकार कल्याण सिंह की गिर गई। कल्याण सिंह एक दिन के लिए जेल गए और फिर कन्वेंसिंग शुरू हो गई। 2 बड़ी पार्टियां साथ में आई, सपा और बसपा साथ में आई। एक नारा चला, मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने कहा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और वो लोग चुनाव जीत भी गए। मुलायम सिंह यादव का एक तो ये नारा था, दूसरा नारा क्या था चुनाव में? दूसरा, एक तो उनका नारा सबसे इंपॉर्टेंट था मिले मुलायम, क्योंकि उस समय राम लहर थी, तो उन्होंने कहा कि राम लहर को डाउन करेंगे, हम जाति के नाम पे खेलेंगे, यादव दलित साथ में आएंगे, चुनाव जीतेंगे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा, दूसरा नारा क्या था?
दूसरा आ रहा था कि ये चीटिंग के विरुद्ध जो कानून है उसको खत्म कर देंगे, उसको उन्होंने ब्लैक कानून कहा, मतलब बच्चे चीटिंग कर सकते हैं। ये आदमी चुनाव की रैली में बोल रहा है और बिल्कुल ट्रू टू देयर वर्ड्स, जैसे ही आया उन्होंने एक हफ्ते में वो कानून खत्म कर दिया। मतलब आप चीटिंग कर लो, आप चीटिंग कर लो, ठीक है। अब 98 में कल्याण सिंह फिर से, हाँ एक बात, वो जो कल्याण सिंह जो कानून लाए थे वो अध्यादेश था, वो भी कानून नहीं बन पाया था, उसके पहले उनकी सरकार गिर गई। अब 98 में आपको पता है कल्याण सिंह दोबारा से मुख्यमंत्री बने, और हाँ जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे पहली बार, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? राजनाथ जी। तो बेसिकली राजनाथ जी ने कानून, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, तो राजनाथ जी, कल्याण सिंह ने जी ने, ये सब लोग अवेलेबल हैं अभी, कल्याण सिंह जी तो नहीं रहे, लेकिन राजनाथ जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि चीटिंग कहाँ से आई ना, बात किसने कब करी, कैसे आई, तो हमको इतिहास पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी वो 1 महीने में जंतर मंतर में कभी नहीं सुना, मैंने सब सुन लिया वहाँ, कचौड़ी पकौड़ी, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये इसको गाली उसको गाली, जो जिस बात का आंदोलन है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। तो मैंने कहा कम से कम इस माध्यम से लोगों को ये तो पता लगे कि मुद्दा क्या है, ठीक है। 98 में कल्याण सिंह फिर आए और अब उन्होंने उसको एक्ट बना दिया। अब एक्ट बनाने के बाद हटाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, वो एक्ट बना दिया। आपको पता है आसपास के राज्यों से लोग यूपी में 10वीं 12वीं का पर्चा इसलिए भरते थे बिकॉज यहाँ पे चीटिंग माफिया अवेलेबल है, मतलब बिल्कुल दुकान लगी, इतना पैसा दो एग्जाम पास हो जाओ। परसेंटेज के भी मार्क्स थे कि 60% लाने हैं तो इतने % लाने हैं तो उतना पैसा दे दो। तो पंजाब से हरियाणा से बहुत सारे लोग यूपी में अप्लाई करते थे कि यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है। अब 2003 में फिर से मुलायम सिंह यादव आ गए। अब वो एक्ट बन चुका था तो हटाना तो मुश्किल था, क्योंकि एक्ट को हटाना मुश्किल होता है, अध्यादेश को, ठीक है, आप एक्ट में मत कन्वर्ट करो। तो उन्होंने कहा उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसको इस्तेमाल मत करो उस एक्ट का, ज़्यादा पुलिस मत भेजो, ज़्यादा जांच मत करो, ज़्यादा पकड़ो ही मत किसी को। तो उन्होंने उसको सॉफ्ट कर दिया, ठीक है। मायावती आई, उन्होंने फिर भी थोड़ा सख्ती से यूज़ करा उसको। फिर आ गए हमारे पढ़े लिखे अखिलेश जी 2012 में, उन्होंने मंच से कहा, मतलब आप स्पीच में आपको सुना दूंगा कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए चीटिंग थोड़ी बहुत कौन नहीं कर लेता। वाइल सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन रैली जहाँ बहुत सारे यूथ हैं सामने, वो चीटिंग को जस्टिफाई करा उन्होंने कि भाई चीटिंग कौन नहीं कर लेता, और वो चीटिंग कंटिन्यू होती रही उत्तर प्रदेश में, चीटिंग माफिया कंटिन्यू रहा उत्तर प्रदेश में। माफिया वो थे कि अगर आप नोएडा में होंगे तो किडनैपिंग माफिया होगा, मेरठ में होंगे तो कार चोरी माफिया होगा, अगर आप बुंदेलखंड में होंगे तो सैंड या बालू माफिया होगा, अगर आप पूर्वांचल में होंगे तो रंगदारी माफिया होगा। वहाँ बने हुए थे, तो उसमें पता था कि इसका किंग पिन मुख्तार अंसारी है, इसका किंग पिन कौन है, वो सब सेट था उत्तर प्रदेश में। और उसको सबको पॉलिटिकल पैटर्नेज था। पॉलिटिकल पैटर्नेज ऐसा ये सारे लोग विधायक सांसद थे, मतलब नॉट ओनली पॉलिटिकल पैटर्नेज, दे वर पॉलिटिशियन देमसेल्व्स, ठीक है। अब एक और बहुत मजे की चीज़ हुई उत्तर प्रदेश में, जो जैसे यूपीएससी होता है जो आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति करता है, ऐसे स्टेट में भी एक कमीशन होता है जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं, जो एसडीएम से मतलब यूपीपीसीएस की भर्ती करता है। उसका जो चेयरमैन होता है, अब इन्होंने करा एक व्यक्ति है अनिल कुमार यादव, उसको बना दिया। 2 साल बाद हाई कोर्ट को उनकी भर्ती रद्द करनी पड़ी। अब जो हाई कोर्ट की जो पिटीशन है उसे पढ़ेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि उनकी क्यों भर्ती रद्द करनी पड़ी। उनके पास ऐसे वो आए एप्लीकेशंस आई कि एसडीएम की 86 भर्ती हुई, उसमें से 56 यादव। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मतलब ठीक है कॉन्फिडेंस हो सकता है 86 में 56। अब देखा कि मार्क्स कितने आए, तो इनके रिटर्न में तो मार्क्स कम थे, इंटरव्यू में सबको 140 140 140 सबको लाइन से 140 मार्क्स, और बाकी सबको 120 मार्क्स। 20 मार्क्स में तो आपको पता ही है ऐसे एग्जाम्स में तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। पहली बात, फिर देखा गया इनका सीवी है कि एलिजिबल थे। इन्होंने लिखा कि हम एक स्कूल के, उसकी एलिजिबिलिटी थी आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हों एटलीस्ट। अब देखा वो तो फर्जी है, वो तो कभी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ही नहीं रहे। जो सबसे आखिरी बात है, उसे देख के आप चकित हो जाएंगे। जब आपको सीवी भेजना होता है तो आप भेजते हैं किसी तरह से, फैक्स से आया उनका सीवी, यूपी लोक सेवा आयोग के ऑफिस में उनका सीवी फैक्स से आया। कहाँ से आया? समाजवादी पार्टी के ऑफिस की फैक्स मशीन से आया। इससे ज़्यादा ब्लैटेंट कुछ हो सकता है। और फिर उनकी भर्ती रद्द हुई। अब जब 2017 आया तो योगी आदित्यनाथ ने उस कानून को फिर से इस्तेमाल करा, और उस समय अगर आप याद हो तो दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, अभी शायद राज्यसभा सांसद हैं। वो मेयर रहे लंबे समय लखनऊ के, अगर आप लोग लखनऊ से हैं कोई, तो उन्होंने फिर से उस लॉ को यूज़ करा जो कल्याण सिंह ने करा था, और बहुत ज़ोर से उसको इम्प्लीमेंट करा। कम से कम 10 लाख लोग ने कम लोगों ने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया 10वीं 12वीं का। मेरी दिनेश शर्मा जी से बात हुई, मैंने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट भी करा। उन्होंने टेक्निकली बताया कि 4 तरीके क्या होते थे जो अखिलेश जी के समय में चीटिंग माफिया था, वो 4 तरह से कैसे चीटिंग करता था। बिल्कुल टेक्निकल, आप सुन के दंग रह जाएंगे अगर आपको नहीं पता है पहले से। तो पहला मेथड था सॉल्वर मेथड।
कि मेरी जगह शांतनु गुप्ता की जगह मैं किसी व्यक्ति को पैसे दूंगा, मुझे तो आता नहीं है वो सब्जेक्ट, तो मैंने किसी को पैसे दिए और वो मेरी जगह लिखने चला गया। आइडेंटिटी छोटे से कार्ड में कौन देखता है, इतने सारे बच्चे आते हैं, हल्का सा चेक करा चला गया, नाम लिख के दे दिया एक फर्जी कार्ड बना के, आइडेंटिटी कार्ड बना के, ठीक है। तो मैंने पूछा कि सर आपने सॉल्व कैसे करा? करा अब हर जगह मोदी जी के टाइम से 14 से आधार सीडिंग सेंट्रल एग्जाम्स में होनी शुरू हो गई, तो वही बच्चा जा पाएगा जिसका आधार है और वैलिडेट है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। शायद विश्व में शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे आधार सीडिंग से आप किसी की, या थंबनेल सीडिंग से, आई स्कैन सीडिंग से आप उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर पाएँ। तो ये टेक्निकल सॉल्व हो गया, बहुत बड़ा मेथड था, सॉल्वर मेथड। ये जो मैं आपके पहले 3 मेथड बताऊंगा, ये सारे इन सेंटर मेथड है, मतलब सेंटर में आने के बाद चीटिंग होती है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है मास चीटिंग। मास चीटिंग मतलब आप सब एग्जाम में बैठे हैं, मैं उस स्कूल का मालिक, किसी स्कूल में होता है ना, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में, मैं इन्विजिलेटर हूँ, मैंने ही सबको पेपर पढ़ के बता दिया आंसर, पहले का बी लिखो, दूसरे का सी लिखो, अब कोई चेक ही नहीं कर रहा है। और वो सेंटर लिए इसलिए गए हैं क्यों? वो सेंटर की बड़ी मार मस्ती थी उत्तर प्रदेश में कि सेंटर मिल जाए, मेरा स्कूल सेंटर बन जाए या मेरा कॉलेज सेंटर बन जाए, क्योंकि सेंटर अगर मुझे मिल गया तो मैं चीटिंग करवाऊंगा। और चीटिंग कैसे करवाऊंगा? और चीटिंग क्यों करवाऊँ? क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। देखिए चीटिंग तो इंसेंटिव है दुनिया में ना, एक कलयुग में चीटिंग तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि भाई किसको मेहनत करने का मन है। अभी ऑफिसर ने बताया इतनी मेहनत से वो जिस रैंक पे पहुंचे, किसको मन है? तभी कुछ लोग बिरले ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो मास रैंकिंग को कैसे रोका? सेंटर के नॉर्म्स बन गए, सेंटर की बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी होनी चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, कंट्रोल रूम्स बने जिससे हर सेंटर वेरीफाई हो। सेंटर कम कर दिए, एक शहर में एक ही सेंटर हो जिससे पुलिस को ज़्यादा गश्त ना लगानी पड़े, सेंटर लिमिटेड हुए, सबकी मॉनिटरिंग। तो इन सेंटर जो फर्रे वाली चीटिंग थी, जो मास चीटिंग थी, जो डिक्टेट करके चीटिंग थी, वो खत्म हो गई। तीसरी चीटिंग तो बहुत ही क्रूअल है, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्रूअल है। मतलब जैसे कॉपी लिख दी मैंने, तो अच्छे बच्चे की कॉपी से पन्ने खींचे और जिससे पैसे लिए उसकी कॉपी में लगा दिया आखिरी के कुछ पन्ने। उसको तो पासिंग मार्क्स चाहिए, उसको कोई फर्स्ट नहीं आना है, उसको तो पास हो जाना है बस, है ना। अब ये दिस इज सो क्रूअल ऑन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट गाय हु इज ब्रिलियंट, राइट। अब क्या करा? आप कॉपी में कोडिंग करी, हर पेज में कोडिंग करी, जैसे आप पासपोर्ट में देखते हैं आपके हर पेज पे आपका पासपोर्ट नंबर इम्प्रिंट होता है हल्का सा, जिससे आप कोई भी पेज अगर मिसमैनेज करें तो पता लग जाए कहाँ से आया। वही जो चौथा मेथड है जिसकी बात हो रही है वो है पेपर लीक। वो सबसे मुश्किल तरीका है, वो सबसे मुश्किल है उसको कैंसिल आउट करना। ये आउट ऑफ सेंटर मेथड, ये सारे तो सेंटर के अंदर हुए। अगर मैं सॉल्वर भेजा, मैंने सेंटर में भेजा, मैंने मास चीटिंग कराई, सेंटर के अंदर करवाई, मैंने कॉपी फाड़ी तो सेंटर के अंदर हुआ जो हुआ। अब पेपर तो कहीं और होता है। अब ये पेपर लीक सबसे मुश्किल क्यों है आप लोगों को समझ में आएगा। और इस बार आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? और चाइना में तो आर्म फोर्सेस के इस्तेमाल से ही पेपर होते हैं। एक बहुत बड़ा पेपर है वहाँ का, गाँव गाँव बोल के 1.5 करोड़ लोग देते हैं। वो जो सेटर होता है उसको 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। भारत में ये करेंगे तो एक और जनता मंत्र में प्रदर्शन होने लगेगा, अरे आपने टीचर को बंद कर दिया। क्योंकि सेटर तो सबसे खतरनाक है, आप उससे चल उसके तो दिमाग में पेपर है तो आप उसको आपको बंद नहीं करना पड़ेगा। वो चाइना में बाद में आते हैं। पेपर लीक में दिक्कत क्या है? देखिए पेपर लीक क्या, आप लोगों को मैंने एक ग्रुप बनाया, आप लोग पेपर सेट कर रहे हैं। पहला तो सबसे पहला सस्पेक्ट तो आप ही हैं। उसके बाद इसको टाइप सेट करेगा, टाइप सेट मतलब इसको ढंग से टाइप करेगा, बनाएगा, 1 2 3 ऑप्शन बनाएगा, वो टाइप सेटर दूसरा व्यक्ति है। फिर ये कहीं जाके प्रिंट होगा पेपर। अब मेरे पास 2 ऑप्शन में सेंट्रलाइज प्रिंटिंग करूं या मैं डिसेंट्रलाइज प्रिंटिंग करूं, मतलब मैं दिल्ली में सारे पेपर प्रिंट कर दूं या फिर तमिलनाडु में एक करूं, महाराष्ट्र में एक करूं, दोनों में अपने प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइज करूंगा तो ईजी है कि मैं उसको पुलिस कर सकता हूं, उस प्रिंटिंग प्लेस को। डिसेंट्रलाइज में मैं कितनी जगह पुलिसिंग करूंगा, है ना। अगर मान लिया मैं 100 जगह प्रिंट कर रहा हूँ तो 100 जगह उस लेवल की डेडिकेशन ऑनेस्टी हो पाएगी क्या? जितना डिसेंट्रलाइज होगा मुश्किल हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट लंबा हो जाएगा, आपको दिल्ली से तमिलनाडु भेजना पड़ेगा, दिल्ली से महाराष्ट्र भेजना पड़ेगा, दिल्ली से मणिपुर भेजना, दोनों के अपने ट्रबल है। अब आप चेन देखिए, सेटर एक व्यक्ति हुआ, टाइप सेटर हुआ, फिर एक प्रिंटर हुआ, फिर जब वो ट्रैवल करेगा तो उसका एक ड्राइवर होगा, उसमें क्लीनर होगा, फिर वो सुबह सुबह तो पहुंचेगा नहीं, किसी स्टोर रूम में रहेगा, वहाँ पे गार्ड होगा। यू आर एबल टू फाइंड कितने लोगों को एक फ़ोटो खींचना है, बस फ़ोटो खींच के कोई। आजकल के मॉडर्न ज़माने में, पहले तो मुश्किल था क्योंकि पहले आपके पास इतने सारे लोग व्हाट्सएप पे नहीं थे, इतने सारे लोग टेलीग्राम पे नहीं थे, तो पेपर लीक करना भी बड़ा मुश्किल होता था। अब तो क्या है, आपने फ़ोटो भेज दिया और उसकी इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है। क्यों इंसेंटिव बहुत ज़्यादा? एक पेपर भेजा 5 लाख मिल। कौन ऐसा ट्रक ड्राइवर है जिसको 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, पीछे माल पड़ा है, उसको फोटो खींचनी है, माल चोरी भी नहीं करना है, बस उस माल की फोटो खींच के भेज देनी है, उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर देखा है कि वो पेपर किस तरह से सील होते हैं, पैकेट होते हैं, वो सब प्रोसेस आते गए ओवर ईयर्स, राइट। अब इसमें जो नीट का पेपर है वो खास है। मैं चाहता था कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं जंतर मंतर में सुनता तो मुझे लगता कि हाँ ये सच में दे आर ट्रू टू द टॉपिक, दे आर नॉट ट्रू टू द टॉपिक, आई विल कम टू दैट। नीट पेपर के लीक होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑफिसर साहब। क्यों प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? वर्सेस लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मैं आपको क्विज करता हूँ, यूपीएससी का पेपर, आईआईटी जेईई का पेपर और नीट का पेपर, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीट के पेपर के लीक होने की है। इंसेंटिव सबसे ज़्यादा लीक होने का, क्योंकि यूपीएससी का पेपर में क्या 3 स्टेज का पेपर होता है।
पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेन देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। अब मुझे एक माफिया मिला, उसने कहा मैं आपको प्रीलिम का पेपर देता हूँ, मैंने 10 लाख रुपए दिए, अब मुझे एडवांस का लीक ही नहीं करवा पाया, तो अब मैं तो बुद्धू बच्चा हूँ, तभी तो मुझे पेपर चाहिए। मैंने अगर प्रीलिम्स क्लियर किया तो मैं एडवांस तो क्लियर कर ही नहीं पाऊंगा अपने आप, तो मुझे तो फिर भी चाहिए। अब वो माफिया बार बार पेपर लीक करवा पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। तो जो भी मल्टी स्टेज पेपर होते हैं उनके लीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जो वन एंड डन बोलते हैं इसको, एक पेपर दिया और आपके वारे न्यारे हो गए, मतलब एक पेपर दिया और आप एम्स दिल्ली पहुंच गए। तो नीट का पेपर वन एंड डन है, मतलब एक ही पेपर से इतना बड़ा आउटकम आता है। बाकी हर पेपर में कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। दूसरी ट्रबल क्या आती थी, आज से 10 साल पहले आप लोगों ने सबने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको हर स्टेट का अपना इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता था, हर स्टेट का अपना मेडिकल का एग्ज़ाम होता था। तो 2014 में जो सरकार आई उसने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को टैकल करा और सारे जितने इंजीनियरिंग हैं उनके एग्ज़ाम को IIT JEE में कर दिया। कुछ जगह तुम मेन का स्कोर ले लो, तुम एडवांस का स्कोर ले लो, ठीक है। सारे जितने भी स्टेट के इंजीनियर मेडिकल के टेस्ट थे उनको कंबाइन कर दिया। उसमें बहुत बड़ी एंटी नीट लॉबी भी है, आपको पता है एंटी नीट लॉबी क्यों है? कि एंटी नीट लॉबी इसलिए है, खासकर साउथ में जितने भी मेडिकल बड़े कॉलेज हैं वो पॉलिटिशियंस चलाते हैं। तमिलनाडु ने तो बहुत समय तक नीट में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो अपना एग्जाम चलाते रहे। क्योंकि अगर आप नीट के थ्रू क्या होता है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो जाती है, आप कोटे से सीट ही नहीं दे पाते, क्योंकि कोटे की एक सीट 2-2 करोड़ रुपए की जाती थी। अब आपको सेंट्रलाइज जो फीस है जो सरकार ने निर्धारित करी है वो तो कपल ऑफ लैक्स में है, उसमें आपको सीट बाउंड करनी पड़ती है। तो इसलिए नीट का विरोध हुआ। जब नीट कंबाइन हो गया तो बच्चे के लिए बहुत आसानी हो गई। आपको एक एग्जाम लिखना है, पहले अगर आपको याद हो तो आपको मल्टीपल एग्जाम्स लिखने पड़ते थे, सबकी एंट्रेंस फीस होती थी, सबके लिए ट्रैवल करना पड़ता था, सबके सेंटर अलग होते थे, सबकी काउंसलिंग अलग अलग होती थी और क्लैशिंग डेट्स होती थी। और कई बार क्या होता था, एक में एडमिशन मिल गया, अब यहाँ पे पैसे आपको एडमिशन सिक्योर करना है, दूसरे का रिजल्ट आया नहीं अभी तक। अब क्या है, सेंट्रलाइज एग्जाम है, उसमें अपनी चॉइस लिखते हैं, आपके सेंटर आ जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नीट बहुत बड़ा पेपर हो गया, क्योंकि सारे लोग वही लिखने लगे। पहले कोई तमिलनाडु का एग्जाम लिखता था, पहले कोई महाराष्ट्र का एग्जाम लिखता था, अलग अलग लिखते थे। अब क्या 22 लाख लोग नीट ही लिखने लगे। अब इसका तरीका वर्ड ओवर केवल या तो चाइना मॉडल, देखिए चाइना मॉडल को मैं मॉडल नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो चाइना में ही संभव है कि आप सेटर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उसके बाद मिलिट्री व्हीकल से सारे पेपर उनके ट्रांसफर होते हैं, मिलिट्री ऑलमोस्ट पूरा एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद भी पिछले 10 साल में 3 बार उनका पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। ये सब करने के बाद भी 10 साल में 3 बार पेपर अलग अलग पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उनका। उसका केवल तरीका है, आप लोगों ने किसी ने GRE GMAT अगर टोफल दिया हो, आज से 25 साल पहले मैंने करीब 2020 में GRE GMAT टोफल दिया था, जो मेरी पढ़ाई वहाँ हुई थी बाहर। तब भी मैं CBT मतलब कंप्यूटर पे लिख के आया था, तब ऑप्शन हुआ करता था पेपर, अब तो ऑप्शन ही नहीं है अब तो। लेकिन वो बड़ा महंगा, उसकी $100 $200 फीस होती है, उतने तो हमारे एग्जामों की फीस तो 2-3 हज़ार रुपये होती है। प्रोमेट्रिक बोल के सेंटर्स हुआ करते थे और उन्हें डम मशीन्स बोलते हैं। डम मशीन मतलब उसमें इंटरनेट नहीं होता है, उसमें आप स्क्रीन भी नहीं चेंज कर सकते, मतलब मॉडल पुराना है, सॉर्टेड आउट है। जब 2014 में सरकार आई, उन्होंने कहा दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप एग्जाम लीक्स रोक सकते हैं। मेरा तो मानना है जो भी पेपर प्रिंट होगा, मतलब अगर वो लीक नहीं होगा तो आई विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि आपने देखिए ना चेन ऑफ कमांड, आप देखिए ना वो सेटर है, फिर वो एक उसका पहले एग्जाम कोई बना रहा है, फिर उसको टाइप सेट कर रहा है, फिर उसको प्रिंट कर रहा है, को 6 जगह ट्रैवल से जा रहा है, फिर वो स्टोर रूम में है। इतनी सारी उसमें ट्रैवल लाइन्स है कि उसकी लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप कितनी पुलिसिंग कर पाएंगे? उसका केवल तरीका है CBT। अब CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, मान लिया 200 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, मान लिया किसी एग्जाम में 200 क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं भाई CBT में भी सेटर तो है ही कोई ना कोई, सेटर तो फिर भी लीक कर सकता है, उसके पास लिखा हुआ उसके दिमाग में है। तो क्या करा जाता है, मल्टीपल सेटर ग्रुप बनाए जाते हैं। मान लिया 200 क्वेश्चन 25 थीम से हैं, 25 मतलब एक थर्मोडायनेमिक्स से है, एक केमिस्ट्री से है, एक बायोकेमिस्ट्री से है, ऐसे 25 टॉपिक से 200 क्वेश्चन बनने हैं। हर क्वेश्चन या हर टॉपिक के अलग अलग सेटर बेस बनाए जाते हैं, मतलब कोई तमिलनाडु में है, कोई इसमें है, और हर मान लिया पहला 200 में से पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में आना है तो उसी के 500 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स पे एक हार्डनेस लेवल के 500 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और एल्गोरिथमिकली उस दिन वो 200 क्वेश्चन अपीयर हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं होगा कि इन सेटर का पेपर आया, कि इन सेटर का आया, कि उसका आया, कि उसका आया। तो यू मेक ए लार्ज डेटाबेस ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपको 200 क्वेश्चन के लिए 50,000 क्वेश्चन बना देंगे। और उससे, और ये मैं कोई नई टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, ये फिगर्ड आउट है, बहुत सारे एग्जाम दुनिया भर में होते हैं, भारत में भी होते हैं, उसमें आता हूँ। तो ये टेक्निक फिगर्ड आउट है। अब क्या हुआ, सबसे पहला एग्जाम 2019 में IIT JEE का CBT बेस्ड हो गया। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 6 साल से IIT JEE, आपको पता है IIT JEE और UGC नेट साल में 2 बार होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बेस्ट ऑफ 2 चलता है ना, ये बल्कि हर एग्जाम के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक अटेम्प्ट मुश्किल होता है। एक अटेम्प्ट के साथ आपके साथ कुछ हो गया, आपके घर में लाइट चली गई, बीमार हो गए, घर में कुछ हो गया, तो कम से कम 2 अटेम्प्ट तो एक साल में मिलने चाहिए इस तरह के बड़े एग्जाम्स के। क्योंकि अभी एग्जाम बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं से सारे एडमिशन्स होते हैं। ऑल इंजीनियरिंग रोल टू JEE,
all central university roll to CUT, all PhD roll to UGC NET, all medical exam roll to NEET, right? तो जो 12 लाख 14 लाख बच्चे करीब IIT JEE लिखते हैं, वो पिछले 7 साल से, पिछले 6 साल से केवल कंप्यूटर सेंटर पे CBT जाके एग्ज़ाम लिख रहे हैं 2 बार। पिछले 3 साल से UGC NET मतलब PhD के लिए जो एग्ज़ाम होता है, वो सारे बच्चे 12 लाख बच्चे करीब UGC NET CBT कंप्यूटर बेस्ड लिख रहे हैं। तीसरा एग्ज़ाम CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब आपको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेने का जो एग्ज़ाम है CUT, वो पिछले 2 साल से ऑनलाइन CBT हो रहा है। और CBT में बिल्कुल कोई स्कोप ही नहीं है ना, मतलब लोग कह सकते हैं EVM, जैसे लोग EVM से लोगों को दिक्कत है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि CBT डम मशीन होती है। डम मशीन मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है, उसमें आप स्क्रीन तक नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें आप 2 ऑप्शन है बस, वो क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन क्लिक करो, नेक्स्ट दबाओ, बस इतना ही उसमें ऑप्शन होता है। आप स्क्रीन चेंज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे सेफ तरीका है, रिजल्ट भी उसमें जल्दी आता है। अब आप कहेंगे भाई नीट क्यों नहीं कर दिया, फिर जब इतनी आपको पता है तो नीट क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आज तक किसी सरकार ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं करा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो CBT का है, इट्स नॉट अ वेरी इजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाना सैंक्टिटी के साथ बनाना बड़ा। तो अब भारत में अच्छी बात है, कम से कम 8 से 9 लाख सीट्स रेडी हो चुकी हैं बिटवीन 7-8 वेंडर्स। कुछ उसमें गवर्नमेंट PSUs हैं, बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी एक कंपनी है। बैंक PO के करीब 1 करोड़ लोग अलग अलग बैंक्स लेते हैं, सब ऑनलाइन होता है। रेलवे के सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं पिछले 6-7 साल से। ये बात मुझे आज तक सुनी ही नहीं कभी मैंने कई लोगों के साथ बैठा पिछले 1 महीने में, रिसर्च करी, मुझे भी नहीं पता थी। थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं पता था। जब मैंने पता करना शुरू करा भाई ये सॉल्व होगी कैसे प्रॉब्लम, तब पता लगा कि आधी सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम भारत में, कुछ एग्जाम्स बचे हैं केवल। अब क्योंकि नीट सबसे बड़ा एग्जाम हो गया है, 22 लाख लोग देने लगे हैं, उतनी कैपेसिटी अब डेवलप हो जाएगी। और उसका भी प्रपोजल आ गया था, ऑलमोस्ट इस साल आ गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे पास रूरल सेंटर नहीं खुल पाए हैं, और नीट ऐसा एग्जाम है जो सबसे रूरल लोग भी देते हैं। IIT JEE कंपेयर टू PhD कंपेयर टू CUT, सबसे ज़्यादा लोग जो एग्ज़ाम देते हैं वो नीट एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे बात फंसी हुई थी। अब आपको लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चला जाएगा क्या? और ये सब जो हुआ है ये भी किसने करा है? ये भी इन्हीं 3 शिक्षा मंत्रियों ने करा है। तो आई थिंक हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को सतर्क रहना पड़ेगा। एनीवन हु केयर्स फॉर देयर कंट्री, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। और अपने आसपास आपका सबका बहुत डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है, उस डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस में मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है उसको हमको कॉन्स्टेंटली टैकल करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan. Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, yeah, because it was another smaller event.
But no, they sent 8,000-mile-an-hour missiles at us. And fortunately, we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Only we, nobody else could do that but us, yeah. US forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on US forces based in the Middle East. The escalation comes after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed responsibility for a missile attack on a US airbase and command center in Jordan. The US military says all the missiles were intercepted. Even as airstrikes continue, CENTCOM says it is strictly enforcing the American blockade against Iran. As of July 29, US forces have redirected 20 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2 others. With Washington and Tehran exchanging attacks once again, fears of a wider conflict in the Middle East are growing. The big question now is whether the confrontation will stop here or spiral into a larger war. अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो, मिलाओ और खाओ, 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ, स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में।
37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने मात्र एक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ, स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. But, you know, we got to smack them a little bit. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very warm welcome. You're watching live and breaking. I'm Tamisha with you. Let's get started with the headline that we're tracking for you this Saturday afternoon. Headlines brought to you by Canara Bank. Together we can. 2 labourers killed in terror attack in Kulgam of Jammu Kashmir. Massive search operations underway to neutralise the terrorists. Pahalgam rerun in Kulgam. Hindus targeted by terrorists in the dastardly terror attack. Mastermind of Pahalgam behind Kulgam terror attack identified as Lashkar Sajid Jatt, the same terrorist behind the cowardly Pahalgam attack. India shines at CWG. Medal tally rises to 27. 7 gold, 13 silver, 7 bronze as of now. Ashmita De makes history at the Commonwealth Games as 23-year-old from Tripura becomes the first Indian to win gold medal in judo.
Neeraj Chopra wins silver. Yashbir Singh bags the bronze at Commonwealth Games in javelin throw in Glasgow. India's total tally rises. And the FCRA bill to be tabled in Lok Sabha next week. Amit Shah to lead the debate. Alright, we have breaking news coming in now, viewers. This is in connection with the Kulgam terror attack. Now, the big update is that the migrants' family, the Hindus who were attacked in Kashmir, their family says that they were asked about the religion. Deepak is one of the terror victims who has been killed. And the family of Deepak says that he was asked about his religion before he was killed. Now, this is an exact repeat, a rerun of what happened in Pahalgam, where first religion was asked. They were asked, the victims were asked to recite the kalma, and then they were killed. Lashkar terrorists shot dead victims after establishing religion. As per the statement coming in from the victim's family, Deepak's family says the nephew was asked about his caste and community by terrorists. Deepak and Bhupendra, two migrants from Chhattisgarh, were killed. Alright, we have Gursimran Singh joining us live on the broadcast for more. Gursimran, well, it looks like a rerun of what happened in Pahalgam. Now, the family of one of those who have been killed in this attack say that they were asked about the religion and then they were killed. Yes, Rakshita, this is what the family of the victim Deepak has alleged. Two Hindu laborers were fired upon by the terrorist backed by the Pakistani terror group Lashkar-e-Toiba. Now, because if you remember that this is complete rerun of what we have seen during the Pahalgam also, because they were asked the religion and fired upon. Yesterday, what we are picking up from the sources in the Jammu and Kashmir police, at least the top brass is denying such claims. They are saying that there were only two laborers there, and since most of the laborers that work in the brick kiln, they are the migrant laborers, so there need not to be any such need for... Hello? What has been said about them, about the incident by the relatives, by the family of the victim. We'll try and connect with my colleague Zeenat, or we'll try and connect with Gursimran to get more details on that, because this is coming in as Pakistan is crumbling. Whenever Asim Munir gets desperate, and when he sees that Pakistan is breaking apart, when he is facing pressure from POJK and it's slipping away, when Balochistan is slipping away, he resorts to these dastardly tactics. He resorts to these attacks, as we've seen in Pahalgam also. And Gursimran is back with us. Gursimran, tell us more details about this incident as far as the family member statement is concerned. Looks like a rerun of the Pakistani design during the Pahalgam attack. Yes, Rakshita, I hope I am audible this time to you. Now coming to this incident that has been reported yesterday evening, the family members are saying that this has been a rerun of what has happened in Pahalgam, that the terrorists came, asked them about their community, caste and religion and all these details, and then they are fired upon them. Though we try to confirm it from the sources in the Jammu and Kashmir police and the top brass also, the top brass is denying stating the fact that all those who work in the brick kilns, they are mostly the migrant workers. So there is a low possibility of any rerun. Now, since it was, there have been some conflicting reports that emerged that there were 2 to 3 terrorists that were there. But what we are picking up, that this is a handiwork of a single terrorist. It is similarly on the lines what has happened in the Anantnag, when Ashik Hussain of the 3rd IRP battalion was fired upon in the broad daylight by the terrorist of Lashkar-e-Toiba, and he unfortunately succumbed to the injuries. So this was a second such attack. There was an input that was generated by the police with regards to such attacks to take place, but unfortunately it could not be averted, and 2 precious lives have been lost. The family says that it was their religion was asked and then they were fired upon. But what the police is saying, they are saying that only 2 people were there, both have been fired upon. So that is the part of investigation that the police is going to investigate all the angles. Also the fact that we see this happens also when there is something brewing in Pakistan, like even prior to Pahalgam.
we saw that how Balochistan, there was a lot of protests, there were attacks on the Pakistani army also by the Baloch rebels. And now we see, again, when Balochistan is slipping away and POJK is witnessing an uprising like never before, we see that Pakistan is resorting to these diversionary tactics and, of course, its design of target killing, and which has been going on for time and for years now, just to disrupt peace that has been restored after Article 370 is abrogated. Rakshita, you have absolutely mentioned correctly that it has something to do with the Pakistan and the situation in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Reason being, see, this attack comes after 2 hour and 43-minute long press briefing by the DGI SPR yesterday, in which he has blamed India for everything that is happening in Pakistan. And then he has said that, see, India is doing this, that. And then in the evening, this attack takes place. Today, if we speak of the situation in the POJK, they have forced these protesters to actually give a halt call. The long march has also been halted. So all these things are what it seems is an attempt to divert from what is happening internally, because it is not only the POJK that is in the troubling waters, but also the situation in the Khyber Pakhtunkhwa and the Balochistan that is almost similar, or rather worst. Reason being that those areas have slipped out of the hands of the POJK. So this is really very concerning for Pakistan, and this might be one of the ways Pakistan is trying to divert the attention, because see, whatever happens in Jammu and Kashmir, whatever the terror groups do, this cannot be done without the involvement and a green signal from the Pakistani deep state. That is the reality, that is the written reality. Because if we speak to the agencies here also, they were of the view that Pakistan has told the terror groups not to go against the security forces or the civilians and lay low. That was what the exact words. And after the Eid in the month of April, it was cleared for the security agencies that now things are going to be in the troubling waters. They are going to carry out terror attacks. All right, many thanks, Goswami, for joining us with details coming in on that story. Now, viewers, we keep a close eye on the developments that are happening in Jammu and Kashmir. Meanwhile, we shift our focus to the world of business, and that's a big story that we're tracking from the world of business now. And it's a big breaking news that Republic Business is closely tracking. It could be the biggest, the insurance sector could be on the verge of biggest overhaul, as Republic Business has reliably learned that the much-awaited insurance reforms document by the IRDAI is expected by the end of July, and we understand is that there could be just biggest changes coming in just a short while from now. Our Public Business editor Pranav Kulkarni brings you more on this. Well, the insurance industry may soon have to rewrite its rule book after years of criticism over mis-selling, opaque commissions and excessive dependence on intermediaries. The insurance regulator, the IRDAI, is now preparing to unveil a landmark reforms document that could fundamentally change how insurance is sold in India. Now, Republic Business has reliably learned that the reforms paper, which was expected earlier this month, is now likely to be released by the end of July. Now, sources also tell Republic Business that the regulator is actively considering doing away with hefty upfront commissions paid to insurance agents. Only months ago, in fact, one of the reports, the Praxis Global Alliance report, raised certain uncomfortable questions about the industry's dependence on intermediaries. For this, in fact, we have Vishal Bhave, a practice leader at Praxis Global Alliance, who is joining us. Vishal, thank you very much for joining us on Republic TV. Thank you, Pranav. So Vishal, let's start by understanding that keeping both insurance and customers in perspective. Now, is the current commission-led distribution model bleeding the insurance industry? So life insurance by definition is a long-term contract, right? Where the premiums are broadly are typically same throughout the tenure of the policy. It's a long-term contract. You should take life insurance when you're looking at something more than 10 years pure. Whereas if you look at general insurance, typically they are yearly contracts, whether it's health or motor, right? So motor insurance is typically a yearly contract. There are two components to motor insurance. One is third-party insurance, which is mandatory by law. Basically, that is the damage which can happen in case of accident to a third party, someone outside your vehicle, right? Similarly, there's a second component which is called own damage. Now, that own damage is discretionary. It's not mandatory,
though it's necessary and highly recommended, everyone should have it. It's not mandatory technically. Life insurance typically gets sold largely through agents, brokers, and banks, right? Whereas for motor insurance, there's an additional element where largely it gets sold through agents or brokers. But at the time of new vehicle purchase, large part of the sale happens through the car dealers from where you go and purchase your vehicle. So that's the fundamental difference as far as the distribution piece is concerned. From the third party insurance, third party component is concerned, it's mandated by law. For motor, for private vehicle or a four-wheeler, for 3 years you have to take when you buy a new car. And for two-wheelers, it is for 5 years, right? And own damage, when clubbed with third party, is called comprehensive insurance, right? But that own damage component has to get renewed every year. So that's one thing which I think all our viewers need to really understand. But Vishal, you say that third-party insurance is compulsory for every vehicle owner. But why are commissions placed on mandatory third-party insurance in the first place? And what does it actually mean for consumers? Why are consumers paying commissions for a product that is already mandatory? So there are certain administrative costs involved, KYC, documentation. More importantly, if there's the promise of the distributor to be present with you or help the consumer at the time of claims. So that's where the commission component comes in. That's an effort for his rewards. Secondly, you will be fairly shocked to know that despite being mandatory, around half the vehicles plying on India's roads today are not covered by third-party insurance. Right. So what it means is it's like a helmet is mandatory today, right? But how many people actually wear a helmet on two-wheelers? The third-party insurance, while it's mandatory, a lot of vehicles on the road, more so two-wheelers in the hinterland, are not insured. So there is this scope and incentive nudge to push distributors to ensure that 100% coverage is achieved. So that's really the logic for third-party insurance, the commissions on third-party insurance. But are they justified by the distribution effort involved? In fact, the question is, why do insurance products such as motor insurance carry such high commissions, as much as 30 to 50%, as has been highlighted not just by IRDAI but even by your report? So there is intense competition for market share, number one. Number two, over the years, motor has unfortunately become a fairly commoditized sort of a product where the brand salience is low, right? Unlike a life and health where the brand salience is slightly high. But motor, not many people just look at the pricing, they'll just look at the convenience and, just end up buying the product, right? So what we've seen in our research and the survey, the report which we brought out through Praxis, is that almost 50% there is churn in terms of customers switching insurer every year for own damage or for comprehensive after 3 or 5 years. And similarly, many of them don't even recall the name of the insurer through whom they have taken that, right? So that's the reality, and hence what is happening is that there's a lot of commission-driven competition where to get that market share, and which has ended up pushing the commissions to a higher rate. But Vishal, are car dealers or insurance agents at all equipped to advise customers on choosing the most relevant car insurance policy for them? Yeah. Okay. The insurance sale through the car dealers is governed through MISP, that's called Motor Insurance Service Provider Guidelines, right? So there are certain norms around it. Having said that, practically, I think this is one thing which is all our consumers and viewers need to really understand. When one goes to buy a new car, right? Typically insurance is shown as bundled as part of the so-called on-road price, right? So you have your car variants which you want to choose. Then there are accessories which you select. Then there is a RTO or a registration component, right? And there is insurance, and all inclusive, the dealer shows you one sheet which says that this is the total on-road cost of the car. Now, my recommendation is that the insurance should really be unbundled from this entire car package, right? Why? Because it is not necessary that you buy the insurance from the car dealer at the time of sale, right? Nobody can stop the consumer to buy insurance either through his or her own agent or through direct company websites or aggregators, etc., and then compare that with what the dealer is offering you. Because if there is a commission involved, high commission involved at the dealership level, invariably the cost
will get passed on to the consumer in terms of the premiums, right? So Vishal, would it be right to say that the policy holders or consumers are directly or indirectly paying these commissions and bearing the brunt of the high commissions or the high intermediary incentives that they are being made to pay for policies that are mandatory? See, in some way it would, right? Because at the end of the day, you are paying if the commission paid to the dealer. Again, that depends on case to case because it's a fairly dynamic market. One cannot have a one size sort of an answer, one size fits all sort of an answer, right? So possible that dealer A, the manufacturer A versus a manufacturer B of the car dealer, there could be a difference in commissions which the insurance company is passing on, right? So one can't have a general rule. What I'm trying to say is that if you find that the insurance being sold through the dealership is at a higher cost or through some brands, if the dealership is pushing some brands which you are not comfortable with, you are not bound by it, right? While I understand that the leverage is high with the dealer when you're going and buying a car from there, you need not, really follow that. You want to do it out of your own choice. Absolutely, you have that right, and if you're comfortable with the dealer, please go ahead. Mr. Bhavi, thank you very much for joining us. We will continue to stay connected with you as we follow this very, very important story and keep coming back to you as the story unfolds further. Thank you very much for joining us on Republic Business. Now, critics have long argued that the current commission structure actually encourages sales over suitability, often leaving consumers with products they neither fully understand nor actually need. This is precisely what, in fact, experts say, that if the regulator in fact proceeds with these reforms, it could make a shift from rewarding more sales to rewarding long-term customer retention and better policy servicing. The big question now is, will these reforms finally put the policy holder ahead of commissions, or will the industry resist